Hello everyone. This year, LevelUp IAS has decided to put all our prelims economy videos of PMP program on YouTube to be available for everyone. The PDF notes for the same is also available in the Telegram channel given in the description. These videos takes care of all the basics requirement plus PYQ discussions. If the response for these videos are good, we also plan to come up with current affairs, economic survey of India and budget session in a very concise manner for preliminary examination in the coming days on YouTube only. I hope you enjoy this video and level up your chances of getting selected in this year's preliminary examination. Thank you very much. Good morning, everyone. We were doing questions of booklet 1, right? What question had we reached? Question number 13. Is this something that we were doing? Okay. Let's do it. Now, I was telling you on that day that we do not know the numbers, we do not know the data here. Still, based on whatever we know, we will try to solve this question. Okay. With reference to Indian economy, consider the following statements. The GDP has increased by 4 times in last 10 years. Let's first answer it in 2010, then we'll answer it in 2025. One, we'll answer it in 2010. In 2010, between 2001 and 2010, has GDP increased 4 times. So, for GDP to increase 4 times, if it was $100 billion, it should have become $500 billion or $400 billion, right? 300% का gain आना चाहिए. In 10 years, 300% का gain would need you to grow at 20-25%. Isn't it? Have we ever grown by 20-25%? समझ में आया? How this could have been easily answered even if we don't know the number. Right? In fact, you will see that अच्छा अभी हम exact numbers भी बता दूंगा मैं what are the numbers here, but this could have been done just by common sense कि अगर हम 10% every year से grow कर रहे हैं तो normal CSAT से calculation करोगे तो it's going to take 6-7 years to double, another 6-7 years to double. है ना, तो 4 times 10% से तो हम grow करते भी नहीं हैं. In 2021 when we had very low base, 21-22 when we had very low base, even in that year the growth rate was around 9% plus. 10% plus से तो growth नहीं हो रहा है, and वो भी consistently. 2001 to 2010, 2008, 9, 10 was also recession year. Not in case of India, we were growing comfortably, but still. So one can be wrong by that sense, by that method, right? Then the percentage share of public sector in GDP has declined in the 10 years. क्या public sector का share after 91 has been declining consistently? After liberalization, privatization, globalization, it has been declining consistently. So in 10 years वाला period, would it decline? Yes. 2000 में आप देखेंगे what disinvestments वगैरह हो रहे थे. Even later, those things were taking place. Right? So what will be the answer here? B will be the answer. Right? 1 is wrong, 2 is correct. So if you want to write down the numbers, in 2000, in the year 2000, our GDP was $468 billion. $468 billion. When? In 2000. In the year 2000. In the year 2010, sorry, मैं real बता, एक मिनट, real पे आते. Real GDP was $800 billion, and in the year 2010 it was $1.5 trillion. Real GDP in the year 2000 was $800 billion. And in 2010 it was $1.5 trillion. 800 billion से it came to 1.5 trillion. And in 2020 it came to 2.5 trillion.
In 2020, it came to $2.5 trillion. $2.5 trillion. So you see, we in between 2000 and 2010, our GDP almost doubled. $800 billion से $1.5 trillion. After that, 2010 से 2020 में it has not even doubled. Right? तो saying कि एक decade में 4 times हो जाएगा, the GDP has increased by 4 times in last 10 years would be wrong. Got it? तो एक part तो चलिए, I hope we understand this. So even if we don't know the exact figures, exact numbers, we should be able to answer it. And even in 2025, if this question is asked, the answer would remain same. है ना? GDP 4 times से तो नहीं बढ़ रहा है, right? Okay, let's go to question number 14. अब इसमें से we haven't done things like meltdown etc. But still, let us try to answer this. इसमें पूछा है which of the pairs given above is are correctly matched? 1 to 2. Okay, let us try to answer it. Meltdown we haven't studied yet. We'll study it in capital market. कोई बात नहीं. But do we know what is recession? What is recession? है ना? Fall in growth rate नहीं, fall in GDP. Growth rate should be negative. That is the time of recession. Fall in GDP growth rate is slowdown. Our GDP was growing at 6% interest rate. It came down to 4% interest rate. तो अब तो GDP बढ़ तो रहा है, but the rate at which it is growing is, it has come down. That is slowdown. Right? So 2 is wrong, and this 3 is also wrong. Slowdown is not fall in GDP. Slowdown may be, even with slowdown, GDP may be growing. It is the fall in growth rate. So 2 and 3 are wrong. Let's try to answer our question with the help of 2. 2 and 3 are wrong. They should not be there. What are we left with? A. है ना? तो we'll study meltdown. Meltdown, stock prices जब drastically गिरते हैं, उसे stock market जब गिरता है, that is called meltdown. But that is something that we're going to study in the capital market. I told you in the beginning, there are 6 core areas that we want to cover, and one of those areas is capital market. Okay. So what is the answer here? A, one only. Okay. Question number 15. चलिए अब आराम से आप लोग करिए, and I will want to see it. Should it also come with negative growth? It should come with negative growth rate. No? I'm sorry, I didn't understand. Come again. Recession, option was fall in GDP. For recession, fall. That is correct. Fall in GDP means negative growth rate, na? Plus negative growth, right? But a fall in GDP will only occur when there is negative growth rate, na? When growth rate is negative, जब growth rate -1% है, तभी तो GDP 1% से गिरेगा, है ना? सुबह सुबह थोड़ी सी चलिए, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. रेज योर हैंड, जो भी आंसर करना चाहता हो उसे प्लीज दीजिए. Just follow. इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन पे है. अब देखो, वी विल स्टडी एग्रीकल्चर सेक्टर एंड देयर वी विल सी दैट करेंटली India's rice production is around 130 million tons and wheat production is around 110 million tons. अभी when it has been consistently growing, वहां पे ये बोल दे रहा है कि rice is 180 million tons is बकवास. पूरा फूड ग्रेन मिला के 180 million tons होगा at that time. Today all the food grain together is contributing to around 330 million tons, जिसमें rice is around 130 million tons, wheat is around 110 million tons. वहां पे ये बोल रहे rice is 180 million tons. So you don't have this data अभी, so I do not expect you to know it, but it's my responsibility to ensure that agriculture updates पे आपको हो agriculture का latest data. In fact, I wait for Economic Survey of India to come. Economic Survey of India का जो एक agriculture पे पूरा chapter होता है, ensure that all my notes are updated by all that data and then I cover it. But इससे ही, just by knowing second point, you'll be able to see कि यार 2 is there in 1, 2, 3, will be able to go for 1 and 3. Now GDP per capita हमें नहीं पता है उस टाइम का, but do we know it for today? What is GDP per capita today? Around $2,500.
अराउंड $2,500, इतना रफली याद रखो, है ना। $2,500 इज व्हाट, इफ अ डॉलर इज 80 रुपीज, इट्स अराउंड 25 into 8 करोगे 2 लाख रुपीस, राइट। तो वन अभी like in current scenario, if they had this, if they had asked this kind of question, you should know the current GDP, that would have solved the problem. You didn't know it at that time, or you didn't know what was the scenario in 2008, is completely fine. ऐसे ही when you will go for exam this year, by that time you will know what is the contribution of wheat, what is the contribution of rice, there will be clarity. Okay, so here what is the answer? D is the answer. Everyone is comfortable with it? Abhi, but in 2025 D will not be the answer, because in 2025 this 2025 में तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. We'll have to give different data and different options. Let's go to question number 16. Question number 16. अच्छा, question number 16, I think it should not have been there. अच्छा, ये question I modified it as per the current data. I'm sorry. I modified this question as per the current data. Which of the following pair about India's economic indicator, agriculture production, are correctly matched? अभी देखो, यहाँ पे भी हम answering it by what? I'm answering it by कि rice 180 million tons, that's too much. Rice is around rice is the most produced food grain in the country. कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में वो राइस है. Some of you may say sugar cane. Yes, I agree. Sugar cane in terms of weight, because there the weight of entire cane is taken. In terms of weight, it is around 350, 400 million tons, but the sugar that comes out of it is much lesser. Okay, तो यहाँ पे भी we could have solved this. Now GDP per capita, here I've said 1,40,000 because ये 2-3 साल पहले का है, where डॉलर्स का रेट भी थोड़ा सा वो था, तो at that time GDP per capita of India was that, and wheat production is around 110. वो मैंने आपको बताया कि 110 है. तो even in the current scenario, with the help of this number, only this number, what number? कि rice is 180 million ton, rice का production is 180 million ton, this answer could have been made right. Got it? You may be like, sir, अभी आपने बोला कि India's per capita GDP is 2,500 and 10 उसे 80 से मल्टीप्लाई करके where did we go? We went to 2 लाख रुपीस. That's true. मैंने 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन बनाया था, उस टाइम डॉलर का रेट भी थोड़ा कम था, and GDP per capita was also around $2,000 के आसपास. तो at that time this was the number. Okay. नहीं, वो हम ना देखो, दो चीजें होती है. एक होता है कि नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे आप अपना पर कैपिटा इनकम बताओ, तो इट इज दैट. जैसे हम अपना नॉमिनल जीडीपी बताते हैं ना कि इट इज हाउ मच इज आवर नॉमिनल जीडीपी, अराउंड $3.6 ट्रिलियन. रियल जीडीपी इज 170 1.7 सॉरी 170 लाख करोड़, और उस तरह से हम बताते हैं, ऐसे 300 लाख करोड़ के आसपास है, तो वो वाला नंबर है. ओके, लेट्स कम बैक. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाँ यहाँ पे आप बताइए मुझे, which one of the following is the correct sequence of decreasing order of contribution? Decreasing order of contribution means first we'll talk about contribution जो highest किसका है, decreasing, decreasing, decreasing. That is the order that we have to say. A, services, industry and agriculture, है ना. तो सर्विसेज का, जैसे लास्ट इकोनॉमिक सर्वे था उसमें सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन वाज 55%. लेटेस्ट डेटा वाज सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन इज 55%, इंडस्ट्री का अराउंड 25% एंड एग्रीकल्चर का अराउंड 18%. एग्रीकल्चर का अराउंड 18%. 2% किसका था? माइनिंग, क्वेरिंग, उन सब का था. तो माइनिंग, क्वेरिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का वैसे हो जाएगा 26.5%. सर्विस सेक्टर 55%, इंडस्ट्री उसमें माइनिंग, क्वेरिंग भी डाल दोगे, दैट्स बिकॉज दैट्स आल्सो इंडस्ट्री, तो दैट विल बिकम 26.5% एंड एग्रीकल्चर इज 18.5%. तो टोटल 100% में ये तीनों कंट्रीब्यूशन है. नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2007, बट वी नो द करंट सिनेरियो आल्सो. इफ दे आस्क इट इन द करंट सिचुएशन, तब भी हम आंसर कर पाएंगे. हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन देखा है. गॉट इट? ओके. Question number 18.
Online students, please, when you're answering it, also write down the question number in front of it. Let's see. Online बच्चे आंसर करिए, अभी ऑफलाइन वाले बच्चे नहीं. एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स, let me see how many of you answer this question. Now here also we'll try to do what? We'll try to answer it in, when was it asked? 2003-4 में कभी पूछा गया होगा, है ना? तो एक तो 2003-4 में, एक 2025-26 में. Do you know why am I giving you two different dates? Because earlier GDP was calculated at factor cost, है ना? Nominal GDP was also being calculated at factor cost. तो हमारा GDP, national income was also calculated in a different manner. Now GDP is calculated at market price. तो GDP per capita and क्या पूछा है? National income will also be calculated at market price, right? So give me two answers, one for 2003-4 and one for 2025-26. Term national, मैं भी देख लेता हूँ. All options are in market price. The term national income represents gross national product at market price minus depreciation, gross national product at market price minus depreciation plus net factor income from abroad, gross national product at market price minus depreciation and indirect. हाँ, तभी इसके आगे डेट नहीं लिखा है क्योंकि मैंने बनाया हुआ है. I was gross national product at market price minus net factor income. हाँ, fine. Don't answer it for 2003-4. Answer it for 2025-26. गलती से ये क्वेश्चन आ गया. It should not have been there. It should have come in your test or it should have come in your RTFQ. We're only supposed to do PYQs here. गलती से बीच में था तो शायद आ गया होगा. नेशनल इनकम, हाँ बताइए. ए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन. एक मिनट रुकिए. हाँ सही है ना, ए सही होना. एक मिनट देखते हैं और देखते हैं, इससे बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. व्हिचएवर इज द बेस्ट विल डू दैट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन. हाँ, जीएनपी के ओके. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डाला ही हुआ है ना ऑलरेडी. ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन. हाँ, and indirect tax minus depreciation and indirect tax plus subsidy. अच्छा नहीं, C will be the answer in factor cost. in अगर ये 4-5 में आया होगा तब, हाँ, I'm sorry, ये मैंने नहीं बनाया होगा फिर. C will be the answer in 2004-5. Why? Gross national product at market price minus depreciation will give you net national product, that is national income, minus indirect taxes. पुराने वाले मेथड में जब हमें फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कैलकुलेट करना पड़ता था, we had to subtract indirect taxes and we had to add subsidies. If you remember this, so C will be the answer in 2004-5 when GDP was being calculated at factor cost. I'm sorry, ये मैंने नहीं बनाया होगा फिर. Let's come again. When we calculate GDP at market price, we say that it is equal to GDP at factor cost plus indirect taxes plus minus subsidies, है ना. तो इसको अगर हम GDP at factor cost निकालेंगे, it will be GDP at market price minus taxes plus subsidies. ये I think we studied this. Did we study this? We studied this. Now let's go back. The term national income, gross national product at market price minus depreciation, net national product, फिर minus indirect taxes minus plus subsidies. It's giving you national income. तो ये कब का आंसर होता? Before 2015. Before 2015, what would be the answer? 18 का आंसर होता C. After 2015,
आफ्टर 2015 ए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये आपको पूरा नेशनल जीएनपी दे रहा है, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन हटाओगे, यू विल गो टू एनएनपी व्हिच इज नेशनल इनकम. इजी. तो आफ्टर 2015 आंसर इज ए. इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दिस? है ना? लोकेश भारती सिंह, what about production taxes, production subsidy? बेटा ये when I wrote taxes, I wrote it total, production tax, product tax, production subsidy, product subsidy. वहां पे मैंने सिर्फ प्रोडक्शन या सिर्फ प्रोडक्ट लिखा होता तो you would have questioned it. I wrote taxes all together. Okay. Now, Apurva is asking, sir, don't we consider national income as GDP? देखो फिर से समझो, एकदम टेक्निकली जाएंगे तो नेशनल इनकम इज व्हाट? नेट नेशनल प्रोडक्ट इज नेशनल इनकम. वेरी टेक्निकली नेट नेशनल प्रोडक्ट इज नेशनल इनकम, आपके नोट्स में दिया हुआ है क्लियरली. व्हेन वी आर स्टडीइंग नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट, वहां पे नीचे लिखा हुआ है नोट नेशनल इनकम इसे बोलते हैं. एंड पर कैपिटा इनकम भी कैसे निकालते हैं? बाय डिवाइडिंग नेट नेशनल प्रोडक्ट बाय टोटल पॉपुलेशन. वेरी टेक्निकली. But in UPSC's PYQs, we will see that they have used national income for GDP also, for GNP also, for NNP also. उन्होंने जो टर्म नेशनल इनकम यूज किया है, जैसे ये क्वेश्चन देखा, इससे पहले भी देखा, तो इट्स नॉट they haven't gone into एकदम टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट. ओके, आर वी गेटिंग इट? तो वेरी आइडियली नेशनल इनकम इज व्हाट? नेट नेशनल प्रोडक्ट इज नेशनल इनकम, वेरी टेक्निकली. बट अगर हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज के बेसिस पे अपनी पढ़ाई करें तो यूपीएससी हैज नॉट बीन वेरी रिजिड इन दैट सेंस. तो कई बार वो सिर्फ जीडीपी को नेशनल इनकम बोल दे रहा है, कभी वो जीएनपी को नेशनल इनकम बोल दे रहा है, कभी वो एनएनपी को नेशनल इनकम बोल दे रहा है. तो बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन आस्क्ड, we'll choose our best answer. Best answer will be what? Net national product, or net national income will be the best answer. If it's available, we'll mark that, else we'll mark gross national product or we'll mark GDP. Okay, yes, you're raising your hand. कैसे कैसे? मैंने तो ये डेटा नहीं दिया था पिछली बार. आपके पास कोई सब्सटेंशियल चीज है? तो मैं क्या करूं? Do you have some data कि अभी के सिनेरियो में हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Do you have some data for net factor income from abroad? पक्का? क्यों? अरे फॉरेन एफडीआई जो इंडिया में आता है उससे अपना नेशनल, फॉरेन एफडीआई जो इंडिया में आ रहा है उससे अपना इनकम बाहर जाएगा. कुछ भी ना. जब क्या बोलना चाह रहे हो मुझे बताओ, कंक्लूजन बताओ. पर यहाँ पे तो एनएनपी पूछ लिया. फिर से ना, ऐसा नहीं है. तुम अपने, मैं 8 साल से पढ़ा के ये कंक्लूजन पे आया हूं ना कि सारे पीवाईक्यू को एनालाइज करके कंक्लूजन पे आया हूं कि कभी हमने नेशनल, यूपीएससी ने नेशनल इनकम में क्या पूछा है? जीडीपी पूछा है, कभी एनएनपी पूछा है, कभी ये, है ना. अभी पुराना एक क्वेश्चन था नेशनल इनकम पे, वहां पे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट नहीं था, जीएनपी नेशनल इनकम. हाँ, जीडीपी था ना, पर यहाँ पे क्या है? ग्रॉस क्या था हमारा आंसर? पहले क्या था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन. नेशनल प्रोडक्ट, इज इट जीडीपी या जीएनपी? फिर अबे यार, अभी हम पहुंचे नहीं, तुम क्यों बहस करने लग रहे हो वहां पे? वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 18, यू आर टॉकिंग अबाउट 19. Okay, 18 is understood. 18 is understood. In 2003-4, factor cost pay will calculate national income. Today, in market price, will calculate national income. But when we look at PYQs of UPSC, we will see national income is not taken very technically as NNP only. We may have different options. When we have an option of choosing NNP, we'll choose NNP. If we don't have NNP in the option, we'll choose GNP. If we don't have GNP in the option, we'll choose
GDP. Are we getting it? Okay. Now, question number 19. Most appropriate measure of economic growth. The most appropriate measure of economic growth is its अब देखो यहां पे भी ना वैसे सोचेंगे कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ग्रोथ होता तो ग्रोथ की बात करनी चाहिए थी ना, ये तो ओवरऑल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देश ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अब मोस्ट अप्रोप्रिएट जीडीपी ऑफ अ कंट्री, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री और पर कैपिटा रियल इनकम, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Okay, some of you say A, कुछ लोग A बोल रहे हैं। Any other answers? C, net national product. Okay. D, per capita real income. Okay. D, net domestic product. देखो, when we are measuring GDP, NDP, ये सारी चीजें, in all that case, what happens? Generally, when we talk about India's GDP, what do we say? It is $3.6 trillion. It is $3.6 trillion. Let's say, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है ग्रोथ की. Let's say next year our production does not increase, just the prices increase. Will our GDP be higher? Nominal GDP measure करेंगे. But is it growth? Growth के लिए हमें real चीज देखनी चाहिए ना. तो growth can be measured by either real GDP or real GNP or per capita real income. ग्रोथ के देखो हमने why did we went for real GDP calculation? Because it gives us better measurement of increase in production without considering price वाला aspect. Otherwise price increase की वजह से production में look better. And the question here is growth. आप growth better कैसे measure करोगे? Real number से constant price पे. Otherwise inflation will also show you growth. Did we understand this? So what will I choose? D? सबको समझ में आ रहा है? Why D? Everyone is comfortable here? Why D? रुको, हाँ अगर इनइक्वालिटी वाला पार्ट होता तो वो चूज करते ना. रुको आ जाओ. लेट्स से वी आर प्रोड्यूसिंग 10 kg of wheat and the market price of wheat is 10 rupees per kg. What is our GDP today? 100 rupees. Next year we are producing 10 kg of wheat but market price is 12 rupees per kg. What is our GDP? क्या GDP बढ़ा है ना? बट ग्रोथ बढ़ा है रियलिटी में नहीं. ग्रोथ मेजर करने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर टू गो बाय रियल. तो रियल जीडीपी या रियल जीएनपी या रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना विल गिव यू अ बेटर मेजरमेंट. राइट? पक्का समझ में आ गया? अंदर तक समझ में आ गया? ओके. गॉट इट? ओके, तो आंसर विल बी डी. आंसर विल बी डी. ओके, if you're making mistakes in these questions, don't worry. It is the process of learning only. मैं बच्चों को क्या बताता हूं कि देखो क्लास में जब हम PYQs कर रहे हैं ना, इट्स पार्ट ऑफ योर लर्निंग ओनली. इट्स पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ओनली. इफ इट वाज टेस्टिंग आई वुड हैव गिवन यू द टेस्ट. ये ले कर ले. Why am I making you solve PYQs in class? Because we are studying the concepts, we are revising the concepts using PYQs. आपका टेस्ट होगा. Your, I think, for batch 2, PMP batch 2, first test is on 13th of Jan or 12th of Jan. जो दूसरा संडे आएगा वहां पे आपका पहला टेस्ट है and I think it's of economy only. That will be your test. वहां पे you evaluate yourself कि how much you have been able to done. पर यहाँ पे if you are making mistakes it's completely fine. But without any discussion try to solve those questions. Okay.
let's come to question number 20. Many of you were not born in 2000, तब ये क्वेश्चन आया था. मैच द फॉलोइंग वाला है. रेज योर हैंड. सबने एक बार देख लिया क्वेश्चन. व्हाट इज द आंसर? ए. एवरीवन इज कंफर्टेबल हियर विदाउट एनी डाउट? ओके. ट्वेंटी वन. ये तो आसान सा हो गया ना. इन ओपन इकोनॉमी द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी. अब देखो यहाँ पे नेशनल इनकम में इन्होंने किसका क्या डाल दिया? जीडीपी डाल दिया. दिस इज हाउ वी यूज्ड टू कैलकुलेट आवर जीडीपी. सी प्लस डी प्लस आई प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. दिस इज हाउ यू यूज्ड टू कैलकुलेट जीडीपी. अब यहाँ पे नेशनल इनकम में क्या जीडीपी डाल दिया कि नहीं? इसीलिए दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि व्हेन दे आर using the term national income, they may put GDP, they may put GNP, they may put NNP. Whatever is the best option, will go for that. Right? So what is the answer here? C. Easy, simple. Okay. 99. आप में से और कम बच्चे पैदा हुए थे, है ना? तब ये पूछा गया था. Since 1980, the share of tertiary sector in total GDP of India has. टर्शरी सेक्टर का शेयर जनरली राइज हो रहा है. ओके, तो ए इज द आंसर. एंड नाउ यू आर थिंकिंग 20-25 साल पहले ही पैदा हो जाते. क्वेश्चंस वर इजियर. नहीं, लेट्स गो टू 23. नहीं, एक्चुअली क्वेश्चंस वर नॉट इजियर. वी think that it was easier. At that time, the level of preparation that could be done was much more, what should I say? The way you could do preparation was much more difficult. You did not have access to these many coaching institutes. Not everyone was able to reach teachers, and thus preparation had to be done mostly from standard books and all. तो उस टाइम ये इस तरह के क्वेश्चंस, a person who has studied only political science, a person who has studied only engineering, a person who has studied only other subjects, उसको most of the time खुद से पढ़ के ये करना होता था. अभी paper have to be made more complicated because we have to choose among so many people, a few people, और ये GDP is equal to C plus D plus I plus N minus export minus import सबको पता है ना? उसमें choosing people would become very difficult. Okay, let's come back. What were we talking about? The supply side economic lays greater emphasis on point of view of 23. अच्छा, ये अब जैसे ये थोड़े से ये कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, एक बार लिख लो इनके बारे में यहीं पे. राइट डाउन सम की थिंग्स अबाउट सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स. Supply side economics is a school of macroeconomics. Supply side economics is a school of macroeconomics. Supply side economics is a school of macroeconomics that emphasize the point of view of producers. That emphasizes the point of view of producers. That emphasizes the point of view of producers. Its core belief is that by creating favorable condition for businesses, such as tax cuts and deregulation, by creating favorable condition for businesses such as tax cuts
and deregulation. It will stimulate production and economic growth. It will stimulate production and economic growth. It will stimulate production and economic growth. This growth will help consumers through low prices. This growth will help consumers through low prices, क्योंकि प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा, तो this growth will help consumer through low prices. This growth will help consumers through low prices, create more jobs, and help in economic growth. Create more jobs and help in economic growth. And help in economic growth. Idea समझो, ये जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स होता है, ये बोलता है कि यार you focus, if you want to revive economic growth, you focus on supply side. Make life easy for producers. They'll produce more, things will be available cheaply, more buying would happen. When they produce more, they'll hire more people will get salaries, they'll be buying more. तो solve the problem of producers. ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अलग अलग स्कूल्स है, हमें उन सब में जाना नहीं होता है प्रिपरेशन के टाइम, बट वन ऑफ द स्कूल्स इज फोकस ऑन प्रोड्यूसर्स, फोकस ऑन सप्लायर्स, फोकस ऑन कैपिटलिस्ट क्लास, मेक लाइफ इजी फॉर देम एंड economy will do well. There are its criticisms too, but again we don't have to go there. So this is supply side economics. ऐसे ही there can be demand side economics, जहाँ पे हम बोलते हैं कि नहीं, buying power of people should increase. If buying power of people improve, what happens? Economy is able to revive. उनका डिमांड बढ़ेगा तो अपने आप प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा. अब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो प्रोड्यूसर विल लीड टू क्रिएटिंग मोर जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल. That is, this is supply side economics. That is demand side economics, which wants to कि यार लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दो. Whereas this will say कि make life easy for businesses, give them tax cuts, give them profits. So this debate may continue, but this question was about that, कि supply side economics lays greater emphasis on the point of view of producer. Its point of view of producer. A will be the answer here. Okay, let's go to 24. Let's go to 24. पहले let's answer it in 1997. B, national income is net national product at factor cost, because उस टाइम हम जीडीपी का कैसे कैलकुलेट करते थे? फैक्टर कॉस्ट पे. तो national income was also calculated at factor cost. तो B is the answer for 1997. For 2025, net national product at market price. Right? अब देखो यहाँ पे नेशनल इनकम का उन्होंने डेफिनेशन नेशनल इनकम वाला ही दिया है. ऊपर नेशनल इनकम जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने जीडीपी वाला डेफिनेशन दिया, C प्लस G प्लस I प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. बात समझ में आ रही है? एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट हैव टू बिकम वेरी रिजिड कि नहीं ऐसा ही है. ओके, इफ आई वाज आस्क्ड टू मेक अ क्वेश्चन, आई वुड हैव गॉन टेक्निकली. क्या नेशनल इनकम पूछो तो नेशनल इनकम पूछो ना, बट आई कैन नॉट गो, मैं जाके प्रोटेस्ट पे तो नहीं बैठ सकता हूं उसके लिए. क्या आपने पुराने क्वेश्चंस पूछे कभी पे, कहीं पे जीडीपी डाल दिया है, कहीं पे जीएनपी डाल दिया है, ये तो नहीं कर सकते. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्लियर योर एग्जाम, विल वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर डूइंग. इफ इन नेशनल इनकम यू आर सेइंग जीडीपी भी हो सकता है, जीएनपी भी हो सकता है, हम बोलते हैं जैसे तुम बोल रहे हो ठीक हो जाएगा. राइट? तो 97 का बी कंफर्टेबल है सब लोग? ओके. 97 24 का बी. 25 given below are two statements, one labeled assertion, other labeled reason.
पहले 1996 में व्हाट इज द आंसर? नाइनटीन 96 ए डी 1996 में बी ए बी डी कोई सी भी बोल ही दो अब। हाँ सी, हाँ एक बच्चे ने हाथ उठा दिया आंसर सी। आपकी सारी तमन्नाओं को पूरा किया जाएगा। देखो लेट्स लुक एट इट। Though India's national income has gone up several fold since 1947, has India's national income went up? Yes, sir. GDP, though it's increased slowly, 3%, 4%, but it went up. There hasn't been no marked improvement in per capita income. Per capita income में बहुत ज़्यादा improvement नहीं. Is it correct? Yes. But why would it be so? Because our population had also increased a lot. नेशनल इनकम बढ़ा है, मान लो उस साल 3% से बढ़ा है, बट पॉपुलेशन भी 2-3% से बढ़ गई, तो डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वाज पर कैपिटा इनकम, बट पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीज, तो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन पर कैपिटा जीडीपी और पर कैपिटा इनकम डिड नॉट टेक प्लेस. रीजन क्या बोल रहे हैं? साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्टिल लिविंग. इट इज नॉट द रीजन, इट इज कंसिक्वेंस. रीजन इज पॉपुलेशन आल्सो वेंट अप. ये तो उसका इंपैक्ट है ना, उसका रीजन नहीं है. इज इट करेक्ट? बट स्टेटमेंट बी इज करेक्ट. In 1996 sizable population was living below poverty. B is correct but is not the correct reason for A. So in 1996 what will be the answer? B, na? A is correct, B is also A is correct, R is also correct, but R is not the correct explanation of A. R is not the correct explanation of A. So what is the answer? B. In 1996 I would have answered it as B. In 1996 I would have answered it as B. नहीं, सब लोग कॉन्फिडेंट नहीं है पक्का? इस सर्दियों में सुबह सुबह उठा के बुला लेता हूं मैं. नहीं, it will impact you positively. I promise you this. It will impact your preparation. It will impact your schedule. It will impact your chances of getting selected positively. देखो, we have जितने ऑफलाइन बच्चे हैं ना, उससे 2-3 टाइम्स ज्यादा ऑनलाइन बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन लिया है. बट only 1/4 of them are watching right now. Less than 1/4 of them. Because सुबह सुबह उठना नहीं है ना? अपने आप देख लेंगे बाद में. And I have told you, videos जब आप देखते हो ना बाद में, तो you think कि 3 hours का वीडियो I'll finish it in 2 hours by running it at 1.25 speed, but in reality आप 1 घंटे बाद उठ जाओगे, आप you'll open Instagram, X को स्टॉक करने लगोगे, उसने न्यू ईयर पे क्या किया, and you'll waste your time. You'll not be able to tell your parents if you're living at home. मम्मी बोलेंगी बेटा ये कर दे, बोला मम्मी क्लास में हूं, थोड़ा उठ जाना 2 मिनट के लिए, पॉज कर दे. मम्मियां have their own priorities, right? But when you are in classroom, you do not have anything. तो सुबह सुबह उठना, स्ट्रगल करना is something जो आपको ना अभी थोड़ा सा इरिटेटिंग सुबह सुबह लगता है. ऐसे सुबह 8 बजे जब रजाई से निकलते हो गए, यार ये क्या पागल हूं मेरे को नहीं करना, है ना? जब नहाना पड़ता होगा, यार सुबह सुबह इतनी ठंड में कौन नहाए, अरे नहाते ही नहीं हो है? ठंडा में नहीं भाई, रोज रोज नहाया करो, है ना? रोज रोज नहाया करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे घर में ना मुझे खाना नहीं मिलता, हमारे घर में खाना नहीं दिया जाता है जब तक तुम नहाते नहीं हो. तो आई हैव अ हैबिट ऑफ, फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज व्हेन आई गेट अप इज, भूख तो लगी रहती है, तो फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज आई विल टेक बाथ. उसके पहले कुछ नहीं हो पाएगा. लेट्स कम बैक. Let's come to 2025. For question number 25, 2025. Though India's national income has gone up several fold since 1947, there has been no marked improvement per capita income. True or false? False. तो देखो मल्टीपल रीजन है. 96 से 2020 तक आप देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन सब्सटेंशियल. 7-8% पे ऑन एन एवरेज वी हैव ग्रोन. Our population has not grown at that faster rate. Our population growth rate has come down. तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गया.
अभी भी पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, बट इट्स नॉट ग्रोइंग ऐसे बहुत हाई रेट पे. तो व्हाट डज इट लीड टू? It lead to GDP is increasing more, population is increasing less, per capita GDP per capita income increasing. तो A is wrong. A is wrong. अब sizable proportion of population of India is still living below poverty line. This is also wrong. अब ना ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव वाला है. सब्जेक्टिव क्यों है? क्या 10% साइजेबल है? 10% is 14 crore people, 15 crore people. अब 15 crore people, कई देशों में 15 crore population नहीं है. तो it can be considered right or wrong based on what do you understand by sizable. हम बोले कि यार लाइक मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बोलूं तो यार नहीं, नाउ द नंबर्स हैव रिड्यूस्ड अ लॉट, तो आई विल गो फॉर मार्किंग इट रॉन्ग ना. फिर दोनों रॉन्ग हो जाएगा, तो यू से सर कोई ऑप्शन ही नहीं है, दोनों रॉन्ग है ना. फाइन, बिकॉज इट वाज नॉट मेड इन, द क्वेश्चन वाज नॉट मेड इन 2025, द क्वेश्चन वाज नॉट मेड इन 2025, तो यू मे नॉट हैव option for it. But I hope we understand, if this is asked today, you'll be having clarity on this question, you'll be able to attempt it effectively. Okay. अच्छा, अभी ना द थर्ड बुकलेट दैट यू हैव गॉट, थर्ड बुकलेट आपको मिल गया आज, है ना. उसमें हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, है ना. तब यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मोर. अभी के लिए आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट व्हाट इट इज. देखो, what is meant by progressive taxation? Progressive taxation means people who have more income will be taxed more, people who have less income will be taxed less. The India mein income tax system is progressive in nature. Someone who has income of 1 crore rupees, that person pays around 36-37% of his income as tax. Someone who has income of 1 lakh rupees, that person does not pay any tax. पहली बात समझ, what is progressive taxation? What is regressive taxation? Regressive taxation is poor people will be charged more and rich people will be charged less. अब वो समझते हैं. Other than taxation, they are talking about expenditure. What is progressive expenditure? Progressive expenditure is you spend more on rich people and you spend less on poor people. जैसे हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन समझा था, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में किसको ज्यादा टैक्स देना है? रिच. एज योर इनकम इज इंक्रीजिंग, you pay more tax. Your taxation is progressive. ऐसे ही अगर हम बोले कि your expenditure is progressive, it means you're spending more on whom? The people who are rich. That is progressive expenditure. But क्या progressive expenditure will lead to redistribution of tax, redistribution of income? नहीं, फिर तो आप rich पे ज्यादा कर रहे हो ना खर्च. तो regressive expenditure will be what? You're spending more on poor people and spending less on rich people. So when we have to go for redistribution of income, tax ज़्यादा लो अमीर लोगों से, spend more on poor people. That will lead to redistribution of income. Progressive taxation, regressive expenditure. Progressive taxation, regressive expenditure. Are we getting it? Okay. 26 में B. We will study these things in more detail in the taxation wala chapter. So answer here is B. But because they were talking about income and all, so I have included this question here. Let's go to 95. Now, अच्छा, students have some doubts about ये वाला. This question कि Varun says, sir, this question was asked in 1996, 5 years after the reforms, and by then population growth rate have already fallen down and the growth rate have already surpassed the Hindu growth rate. Assertion does not look right in this context. कि देखो, population growth rate doesn't fall by economic reform. 4-5 साल इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ डजंट फॉल. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैड बीन फॉलिंग सिंस 1980s, है ना. ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ
Our economic growth was not very high between 1991 and 99. Best economic growth was between 2003 to 2007. जो हम रिफॉर्म्स करे हैं ना, उसका इम्पैक्ट, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना, प्रोडक्शन होना, it took some time, and that's why a term that has been used is substantial. Marked improvement, no marked improvement. Marked improvement is दिखने improvement हुआ, but substantial improvement नहीं हुआ. Okay, तो yes, we can debate कि सर थोड़ा improvement तो हुआ तो A should be correct, वो वाला point. But again, you may have your interpretation of the English. Here we're debating about the how we'll interpret this question, not about the concept as such. तो थोड़ा improvement हुआ तो उसमें A should be wrong because it's saying no marked improvement. I'm saying कि when improvement is substantial तब हम इसे consider करते हैं. Okay. So if we compare the per capita GDP of 1947 to 1993, it has risen by many times as the GDP. Beta, it has risen because you are considering the nominal GDP. आप real को consider करोगे तो there were still issues. Population 3-4 गुना बढ़ गई है. Please understand. है ना? Population at the time of independence was around 33 crores. It went down to around 100 crores by this time. Okay. Okay. Let's 25 में I'm not going back again on it. थोड़ा सा we may have differences, but again हमारा interpretation अलग-अलग हो सकता है, and based on that there can be difference. This we have done. What is the answer here? B. 27. The main reason for low growth rate in India, in spite of high rate of saving and capital formation. Saving होती है, capital formation होता है, तो growth तो होना चाहिए, but क्यों growth नहीं हो पा रहा? High capital output ratio. देखा तीसरी बार आया है ये क्वेश्चन. Why it's important to focus on the concept of capital output ratio in a more effective manner. So I've tried to include questions of last 30 years here in order to ensure that you understand the overall pattern. In every chapter I'm not covering all 30 years question, but here I wanted you to do this because I primarily wanted you to look at the GDP का definition वाला issue. Otherwise आप लोग ना लड़ने लगते हो मुझसे, सर आपने जीडीपी में जीएनपी डाल दिया, नेशनल इनकम में जीडीपी डाल दिया, वो पॉइंट कर, बिकॉज हियर बाय दिस टाइम we have seen 3-4 questions on the definition of GDP, and you will see that UPSC itself has kept on varying its meaning in the sense कभी वो नेशनल इनकम का मतलब जीडीपी पूछ ले रहे हैं, कभी नेशनल इनकम का मतलब एनडीपी जीएनपी पूछ ले रहे हैं, कभी नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी पूछ ले रहे हैं. ओके, वी कंफर्टेबल? यस. प्रोग्रेसिव, देखो बेटा, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर ऐसे समझो, आई एम गवर्नमेंट and I have to spend more money. I have to spend more money on rich people. Will it lead to redistribution of income? Redistribution कब होगा? Redistribution is जिनके पास ज्यादा है उनसे थोड़ा लेके जिनके पास कम है उन्हें देना. That is redistribution. तो जब मैंने ज्यादा टैक्स लिया किससे? रिच से. मैंने ज्यादा स्पेंड किया किस पे? पुअर पे. तब redistribution होगा ना. बट प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर मींस आप गरीब लोगों पे कम स्पेंड करो और अमीर लोगों पे ज्यादा स्पेंड करो. अच्छा, वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस जनरली रिग्रेसिव होते हैं. अभी पढ़ेंगे, टैक्सेशन आ रहा है ना, थर्ड बुकलेट आ रहा है, बहुत डिटेल में है, डोंट वरी. प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर लोअर इनकम लेवल पे भी होता है, हायर इनकम लेवल पे भी होता है, हायर इनकम लेवल पे ज्यादा होता है. ओके, चलिए, लेट्स नाउ कम टू आवर सेकंड बुकलेट, इन्फ्लेशन. अच्छा, बिफोर वी गो देयर, देखो, देयर इज अ कंसर्न रेज्ड बाय वन और टू स्टूडेंट्स कि सर 2 to 4:30 ना एक और क्लास होती है, तो somehow we have to sit for 7.5 hours continuously if you teach till 2:30 or 2 p.m. तो I'll try to wind up it by 1:30, और नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंडे से I'll shift the class थोड़ा और जल्दी, है ना. थोड़ी अब चली गई पीक, सर्दियां चली जाएंगी, मतलब क्या बोलते हैं, इस नए साल का रेजोल्यूशन है सब लोग सुबह 5 बजे उठेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, है ना.
ठीक है, तो आई विल फिनिश इट बाय 1:30 बिकॉज वो आई एंड ऑल्सो मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया कि तो मैंने रियलाइज किया हाँ यार 2 बजे तक वो पागलों की तरह यहाँ बैठा, फिर 2 to 4:30 सीसैट क्लास में ऑल मर जाएंगे बच्चे। सीसैट को नहीं, वो फिर 5 बजे से और भी क्लासेस हैं, मतलब क्लासरूम्स का भी शेड्यूलिंग, क्लासरूम के ब्लॉक्स जो अवेलेबल रहते हैं वो 8 to 11, 11 to 2, 2 to 5, 5 to 8 वैसे अवेलेबल रहते हैं। एंड क्लासरूम शुड बी लेफ्ट अ बिट अर्ली सो दैट न्यूज, जैसे शाम को हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी की क्लास है इसी रूम में, तो दैट क्लास, इन दैट क्लास आल्सो आप जैसे फुल है बच्चे वैसे तो बहुत सारी भीड़ हो जाएगी अगर हम 5 बजे तक ब्लॉक करके रखेंगे। तो सीसैट को लेट नहीं, आपको जल्दी करेंगे, आपको जल्दी जल्दी पहुंचाएंगे, ठीक है। एक चीज वो करेंगे, दूसरा जो ब्रेक होगा अपना वो बस 15 मिनट्स का होगा अभी, जो क्योंकि आप उसमें लंच नहीं कर रहे हो, है ना, तो आई वाज थिंकिंग दैट वुड बी अ लंच ब्रेक, बट यू आर नॉट हैविंग लंच, लंच आप करो कब, 1:30 पे, बिफोर योर सीसैट क्लास। तो एक तो वो कर देते हैं, और आई विल आल्सो डू दिस कोशिश, आई विल आल्सो अटेम्प्ट कि सीसैट क्लास भी 2:10 से हो जाए, सो दैट यू हैव 40 मिनट्स का ब्रेक बिटवीन GS class and CSAT class, so that even if some of you is going back to their room and eating food and coming back, that would be feasible. एकदम relax हो जाओ before you go for the other class. ठीक है, क्या कर रहे थे? चलिए, let's come to price index and inflation. दानिश पूछ रहे सर सीसैट क्लास कब से शुरू होगी? बेटा 30 से शुरू हो गई है। when the economy classes started, हमने नीचे आपको इकोनॉमी में कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओ तो सीसैट भी क्लासेस शुरू करवाती है। So it has already started from 30th. Okay. If you are already enrolled, आप अपने पोर्टल पे देखिए, उसमें सीसैट भी होगा। Now let's come to price indices and inflation. अच्छा, before we go into this, let's first understand price index क्या होता है। देखो, I personally did not want to teach economy. मैंने पास्ट में पढ़ाया था कभी, बट मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा था, तो वी हैव बीन टेकिंग डेमोज ऑफ लॉट्स ऑफ टीचर राइट फ्रॉम 2021, बहुत सारे। और ना कई बार टीचर्स जो मिस्टेक करते हैं, जब वो आते हैं कि सर मैं इन्फ्लेशन पढ़ाना चाहता हूँ, उनका पढ़ाओ भाई, दे डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन सीपीआई क्या है और इन्फ्लेशन क्या है। यार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, वो क्या चीज है, इन्फ्लेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो हम पहले समझते हैं व्हाट आर दीज प्राइस इंडेक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स is calculated with respect to base year, inflation is always calculated with respect to previous year। ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, ये समझ लेते हैं और फिर हम आगे जाएंगे, आगे के कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइस इंडेक्स। दिस प्राइस इंडेक्स में this in this price index we'll have different kind of indices, we'll have CPI, we'll have WPI, CPI maybe there will be different types, but pehle let's understand in simple terms what is price index। देखो, let's say there are only we people in a country, हम लोग ही एक कंट्री में, और प्राइस राइज का हम पे क्या इंपैक्ट होगा ये मेजर करना है। एंड सपोज वी ओनली कंज्यूम टू थिंग्स, वन वी कंज्यूम इज व्हीट, हम एक व्हीट कंज्यूम करते हैं, अदर थिंग दैट वी कंज्यूम इज सॉल्ट, एंड लेट्स से थर्ड थिंग कोल। वी आर कंज्यूमिंग थ्री थिंग्स। व्हाट डू वी कंज्यूम? वी कंज्यूम wheat, we consume salt and we consume coal। कोल पे खाना बनाओगे, इसलिए these are the three things that we consume। Okay, now wheat is 10 rupees per kg, rupees 10 per kg, salt is rupees 2 per kg, and coal is rupees 2 per kg। ये सिचुएशन है। फाइन, नेक्स्ट ईयर द प्राइसेस ऑफ कोल increase by let's say 200%, and it goes to rupees 6 per kg।
नेक्स्ट ईयर प्राइसेस ऑफ कोल इंक्रीज बाय 200%, मतलब 200% से इंक्रीज हो गया है, तो 4 रुपए से और इंक्रीज हो गया, इट हैज कम टू 6 रुपीज पर केजी, इट हैज इंक्रीज बाय 100%, तो इट हैज बिकम रुपीज 4 per kg, and let's say it has increased by 50%, it has gone to rupees 15 per kg. Now, what will be the impact on us of this increase? क्या हमारा खर्चा 200% से बढ़ेगा, या will it increase by 100%, will it increase by 50%, or will it be somewhere in between 50 or 100 or 100 and 200? कहां पे रहेगा? It will depend on how much are we spending on something. Some of us may not be spending anything on coal, तो coal का प्राइस 5 गुना भी बढ़ जाए, it is not impacting me. Some of us may not be, or the amount of money that we are spending on wheat is, let's say, much higher. We are spending 100 rupees on wheat, we are spending, let's say, 2 rupees on salt, and we are spending 2 rupees on coal. So if you increase its price by how much? By 200%, it goes to 6 rupees. Our next month's expenditure, next year's expenditure will be 6 rupees. If we increase its price by 100%, our next year's expenditure will be 4 rupees. But if we increase its price by 50%, our next year's expenditure will be 150 rupees. किसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ? जिसका प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ा था उसका नहीं. While increase in price played a role, but the how much you're spending on that also played a role, right? And therefore when we are measuring कि यार कितना प्राइस बढ़ा है एक कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस राइज विद रिस्पेक्ट टू अ बेस ईयर. देयर वी विल आल्सो कंसीडर द वेट, हम किस चीज पे कितना, हाउ मच मनी आर वी स्पेंडिंग ऑन व्हाट आइटम, how much money are we spending on what item. उससे we create index, and then this index is used to measure with respect to base year what is your expenditure. If in base year, तो generally हम बोल देते हैं CPI in base year is 100, and then when we calculate CPI 7 years later, if it is 170, then we say with respect to base year prices, your expenditure has increased by 70% with respect to base year. When CPI is 200, so in base year you were spending 100 rupees, today you will spend 200 rupees. But this is not how inflation is calculated. Inflation is never calculated with respect to base year. थोड़ा और basic पे आ जाते हैं. पहले let's look at the definition. A price index क्या होता है? CPI is one of the price index, WPI is one of the price index. What is price index? A price index is a measure of how average price of basket of goods and services change over time with respect to base year. Price index में calculation will always be with respect to base year. So what is price index? A measure of how average price of basket of goods and services change. अब इसे थोड़ा सा वैसे समझते हैं, अपने एग्जाम्पल से समझते हैं. This was our example. This was our example. Let's say we consume 10 kg of wheat, we consume 1 kg of salt, and we consume 1 kg of coal. आप बोलोगे सर कोल तो ज्यादा कंज्यूम होगा, फाइन. For simplification purpose, let's say this is the scenario. Now, इससे we understood कि यार when we will be creating CPI, जब हम CPI create, तो what is CPI? ये सुनाई दिया मुझे, कोई एक बताओ. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फुल फॉर्म. अच्छा, what is a price index? Price index is a tool using which we measure the changes in prices, increase in prices with respect to base year. Fine, ये अपना
price index. Let's say we are creating our price index. हम price index create कैसे करेंगे? हम price index ऐसे create करेंगे, we'll do survey. Let's say हमें consumer price index create करना है for these consumers. We'll do survey. How much do you spend on wheat? How much do you spend on coal? How much do you spend on salt? How much do you do that? How much do you do that? उससे we get on an average, these people consume 10 kg of wheat and thus spend 100 rupees on wheat. These people spend 2 rupees on coal. These people spend 2 rupees on what? Salt. Right? तो हम ना फिर wheat को और ये कैलकुलेशन में ना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. लेट मी मेक इट 9 kg. 9 kg. वी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हम चेंजिंग है 9 kg. नहीं 9 kg and 5 kg and 5 kg. Just to simplify calculation, I do not want to use calculator and take it ahead. Let's say मेरे सर्वे में क्या आया? I'm consuming 9 kg of wheat, 5 kg of salt and 5 kg of coal. So I'm consuming 90 rupees worth of wheat, 10 rupees worth of salt and 10 rupees worth of coal. 5 ना? अच्छा ये प्राइस भी है, इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं. ₹1 per kg, ₹1 per kg. So eventually what did it come? I'm spending 90 rupees here, 10 rupees here and 5 rupees here and 5 rupees here. In reality it will not be like this. Please understand. Reality mein you may be spending 1000 rupees on something, 50 rupees on something, 30 rupees on something, 400 rupees on something else, 500 rupees on something else. In reality there are hundreds of items we consume. है ना? Right? So here I'm making my expenditure to go to be 100 rupees. बेस ईयर में मेरा एक्सपेंडिचर कितना है? 100 रुपीज है. इन रियलिटी जब हम सीपीआई कैलकुलेट करेंगे माय एक्सपेंडिचर में भी 3000 रुपीज. बट टू सिंप्लीफाई थिंग्स आई एम मेकिंग इट 100 रुपीज. इससे आई ऑल्सो गेट वेट. व्हाट इज द वेट ऑफ व्हीट? 90%. राइस सॉरी सॉल्ट 5% एंड कोल का 5% वेट है. तो व्हेन आई विल कैलकुलेट सीपीआई, जब मैं अपना सीपीआई में आइटम्स आइडेंटिफाई करूंगा, आई विल गिव 90% वेट टू व्हीट, 5% वेट टू सॉल्ट, 5% वेट टू कोल. फाइन. नाउ अब क्या होगा? हाउ डू आई कैलकुलेट सीपीआई फॉर एनी कमिंग ईयर? इन द बेस ईयर व्हाट डू आई से? आई से सीपीआई इज इक्वल टू 100. बेस ईयर को मैं बोल देता हूं, बेस ईयर में सीपीआई और प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 100. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स छोड़ो, प्राइस इंडेक्स बोलता हूं. बेस ईयर में प्राइस इंडेक्स इज 100. और to make it a bit more realistic, make it a bit more realistic, let me make it 100, 10, 10, 900, 50, 50. अब price index is equal to 100 and prices अलग है, price index अलग है, because in reality price index is different, prices are different. Right? Let's say this is the scenario. So first I did survey. बेस ईयर का डेटा मैंने सर्वे से निकाला कि यू स्पेंड 90% ऑफ योर मनी ऑन wheat, 5% of your money on salt, 5% of your money on coal. ऐसे पैसे स्पेंड कर रहे हो. Now when I have to calculate CPI for next year, what I assume is आपका ये जो कंजम्पशन का साइज है ना, that is not changing. Household is consuming same amount of wheat, same amount of salt, same amount of coal. What changes? Price changes. So let's say price of wheat became 110, price of salt became 12, price of coal became 12. Right? So when I have to calculate CPI for this year, it will include your expenditure for this year divided by expenditure for base year into 100. ये फॉर्मूला आपके नोट्स में है. तो expenditure for this year is what? 110 into 100
12 into, sorry, 110 into 9, 990, 5 into 12, 60, 5 kg into 12, 60. This is 1110, 1110. तो अब मुझे इस साल का CPI जब कैलकुलेट करना पड़ेगा, when I have to calculate CPI for this year, I will calculate it how? I'll calculate it like this: 1110. My expenditures for this year divided by base year. Into 100. So how did I calculate? So what will be my CPI? 111. Base year का CPI was 100. This year CPI is 111. Okay, so let me go back to this. यहाँ पे मुझे अपना CPI लिख देते हैं. Let's say this year was 2010-11. यहाँ पे मैं base year मानता हूँ, CPI is 100. 2011-12. What is my CPI? 111. 2011-12 CPI is equal to 111. 2012-13 पे आते हैं. 2012-13 पे आते हैं. Let's say now the prices are, यहाँ पे प्राइस कितना हो गया था अपना? 110 हो गया था? नहीं, 9 kg into 110 था प्राइस. Okay. Let's increase price a bit further, है ना? Let's make it go to 120. Let's make it go to 13. Let's make it go to 13. ये realistic है थोड़ा सा data. Now when I कि मेरा expenditure, consumer expenditure कितना होगा? 120 into 9 kgs what I was consuming. So that is what? 1080. 13 into 5 kg, 65. 13 into 5 kg, 65. What is my expenditure? 0, 6, 6, 12, 8, 20, 21, 2. Is this my expenditure for this year? What year? 2012-13. Now, when I have to calculate CPI for this year, CPI is always what? This year's expenditure. What is the expenditure? 1210 divided by base year. CPI is always calculated with respect to base year. Base year में कितना expenditure था? 1000 into 100 will give you price index for, so consumer price index for this year or price index for this year. What is it? 121. Now, if I go back, 2012 में CPI कितना आ गया? 121. Let me just remove it. ऐसे ही, by same method, let's say I come to 2013-14 में CPI coming to 130. Are we clear? Are we clear how CPI is being calculated? सबसे पहले items that you are consuming, उसके basis पे weight is given to different item, and then it is said कि CPI for base year is 100. CPI for base year is 100. आपका base year में जितना expenditure हुआ, expenditure in any future year, तो expenditure in any future year divided by expenditure in base year into 100 will give you CPI. Now, we have CPIs. We have CPIs. How will we calculate inflation? अगर मुझे, if I have to calculate inflation of 2012-13, inflation will be calculated using CPI. CPI was calculated with respect to base year. Inflation will be calculated using previous year. So if I have to calculate inflation for the year 2012-13, what will I do? I will say CPI for this year 2012-13 minus CPI for
previous year divided by CPI for previous year into 100. देखो यहाँ पे मैं CPI for base year वाला, यहाँ पे I'm considering the increase first thing. यहाँ पे I'm considering increase कितना हुआ, and then I'm calculating inflation with respect to previous year, not base year. So in 2012-13, I will mark it like this: 121 minus 111 divided by 111 into 100 is equal to 10 by 111 into 100, which is 1000 divided by 111, which will come out to be somewhere around 9%. This will be my inflation. This is how we calculate inflation. So CPI is different, inflation is different. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वो कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, आपका प्राइस कितना बढ़ा है अभी. तो इफ बेस ईयर में सीपीआई इज 100, टुडे इट इज 111, तो बेस ईयर से 11% ज्यादा है. सीपीआई इज 121, बेस ईयर से इट्स 21% मोर. सीपीआई इज 130, बेस ईयर से इट इज 30% मोर. CPI is 180, base year से the prices are, your expenses will be 80% more. Prices are 80% more with respect to base year, whereas inflation is calculated with respect to previous year. Indexes are calculated with respect to base year, inflation is calculated with respect to previous year. यहाँ देखिए, CPI for this year minus CPI for previous year divided by CPI for previous year into 100, ये ऐसे मैंने inflation calculate किया. तो this is CPI inflation, this is consumer price index. Do we understand this? पक्का? ये fundamental concept ना clear होना चाहिए किसके बीच में? What is price index? Price index is measuring average change in price with respect to base year of a basket of goods and services. Basket of goods and services are determined by surveys in the beginning. Whereas inflation, CPI inflation will be increase in price with respect to last year. These two concepts are slightly different. कई बार हम inflation बोल देते हैं CPI. CPI is measuring price rise with respect to base year. CPI inflation will be measuring percentage increase of price with respect to previous year. Do we get this? Okay, so let us come back to our notes. A price index is measure of how average price of basket of goods and services change over time. That is with respect to base year. Average price change over time. Base year में price index is 100. If it has become 180 in 10 years later, then with respect to base year, prices have increased by 80%. Prices of items which are in the basket of that index, weighted price. We're talking about weighted price. Why? Because price of different items may have changed differently, but weighted price may have changed differently for us. Because किसी item पे हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, किसी पे कम पैसे खर्च कर रहे हैं. तो any price index is calculated by measuring the rise in price of current year with respect to base year. Note it carefully. Price index will always be calculated with respect to base year. और यहाँ पे ना measuring the rise in price of current year with respect to base year ठीक है, but ये price weighted price होगा. Because if some item you are consuming more, if its price increase, then your CPI increases much higher. If some item you are consuming less, जिसका weight कम है, उसका price बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, your CPI will not increase that much. Do we understand this? Price index is weighted price for current year divided by weighted price. सिर्फ price नहीं, weighted price for current year divided by weighted price for base year. Please note, price index is calculated with respect to base year. Weighted price for current year divided by weighted price for base year into 100 multiplied by 100. ये बहुत अच्छे से समझ लो. And please understand, सिर्फ price नहीं, weighted price. तो if you are consuming wheat more,
its weight here will also be higher. So if its price increases a lot, your overall price CPI will also increase a lot. But if wheat constitutes 90% of your expenditure, and if its price is not increasing substantially, and price of salt and coal may increase substantially, that will not have a lot of impact on CPI because their weight is lesser. So what is CPI for any year? CPI for any year is weighted price for that year divided by weighted price for base year into 100. It is not inflation. Inflation is increase in price with respect to previous year. Inflation is defined as an upward movement in general prices of goods and services and is estimated as a percentage of rate of change in a price index over the reference time period. It can be measured on the basis of consumer price index or wholesale price index. Inflation कैसे measure कर रहे हैं? Current price का price index minus last period का price index divided by last period का price index into 100. So if when we are using CPI of current year minus CPI of last year divided by CPI of last year into 100. So there's a difference between inflation, there's a difference between price index. Price index is calculated by weighted price for this year divided by weighted price for base year into 100. Inflation is calculated by CPI price index for this year minus price index of previous year, last year, divided by price index for last year into 100. बात समझ में आ रही है? Now, UPSC has yet not asked questions on the difference between CPI and inflation, but I feel कि ये बहुत ही बेसिक चीज है. अगर आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो और आपको समझ ही नहीं है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग चीज होती है, इन्फ्लेशन अलग चीज होती है, तो आगे की बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी. अब यूपीएससी ने, मैंने बोला डायरेक्टली इन दोनों के बीच में सवाल नहीं पूछा, बट यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक दिस. इफ सीपीआई इज इक्वल टू 400, if CPI is equal to 400 today, what does this mean? It means inflation is 400%. It means with respect to base year, prices have increased by 4 times. Or there's an increase in price 3 times बढ़ गया है. और base में 100, if I was spending 1000 rupees in base year, today I'm spending 4000 rupees. ये सवाल पूछा है यूपीएससी ने. And that is why it's important for us to understand the two things. So if when you go home, एक बार अच्छे से और revise करो, you will see that there will be a clear understanding here. Okay. Now Varun is asking, sir, can weightage of different products change from year to year? No. Weight is determined. Weight in the sense, how much are you consuming that is determined in the base year's consumer survey only. Weight then do not change in between. But recently, we will talk about CPI, we'll talk about wholesale price index. When the recent changes in wholesale price index occurred, when 2017 May, we made some changes in the wholesale price index. We changed it base year, we changed the number of items which were in the basket. When we changed that, government came up with this mechanism ki in between there will be dynamic addition removal of items there. तो अभी समझते हैं, उस वाली चीज को समझेंगे थोड़ा सा. But let's now talk about some of these things. Base year is only used for calculation of index and not for calculation of inflation. Note it carefully. Index को calculate करते time prices of weighted price of this year divided by weighted price of base year into 100. That is how we were calculating index. But when we are calculating inflation, weighted price of this year minus weighted price of last year divided by weighted price of last year into 100. यहाँ पे inflation calculate करते time हम क्या नहीं use करते? Base year use नहीं कर रहे हैं. Weight in CPI is decided on the basis of expenditure survey. Like initially when we have to create this consumer price index, how much weight different item has to be given, we will do a expenditure survey. Households का will do expenditure survey. How much do you spend on food? Wheat पे इतना, दाल पे इतना, pulse पे इतना, okay. How much do you spend on schools?
how much do you spend on transportation. We'll do this kind of surveys and based on that we'll create this basket or we'll create this price index. जो base year में we'll say price index is CPI, उसका value is 0. And then every year with respect to that we'll keep on calculating it. समझ में आ रही है बातें? Okay. Now we use various price indices. Consumer price index, combined urban rural wholesale price index, consumer price index, industrial worker consumer price index, urban non-manual employees consumer price index, agricultural laborer consumer price index, rural laborers. बहुत सारी चीजें. पहले क्या होता था? पहले like before, these three things have come over the last 15 years only. उससे पहले we did not have consumer price index combined, consumer price index urban, consumer price index rural. ये नहीं था. What we had was wholesale price index. What we had was wholesale price index. Wholesale price index was measuring prices at the wholesale level. Producer के पास वो कितने रेट में कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है. Like I'm producing a tractor. How expensive has tractor become when compared to base year? On that basis, wholesale price index will be calculated. अभी आते हैं इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे. But earlier, when we were measuring consumers के लिए price index, then we were measuring it based on the category of consumer. जैसे consumer price index, industrial laborer वाला कहाँ गया? हाँ ये रहा, industrial. Consumer price index for industrial worker. Consumer price index for industrial worker में क्या होता था? To create this index, what will do? किसका सर्वे होगा? Industrial worker का सर्वे होगा. Industrial worker से पूछा जाएगा, there will be some industries identified, their industrial workers would be asked, how much do you spend on wheat, how much do you spend on pulse, how much do you spend on onion, how much do you spend on tomato, how much do you spend on education, how much do you spend on health, how much do you spend on pan gutka, how much do you spend on alcohol, how much do you spend on housing, how much do you spend on rent. On that basis industrial worker का एक CPI industrial worker will be created. फिर next year CPI will be calculated. Weighted price of this year divided by weighted price of base year into 100. और उसकी बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा inflation for industrial worker. तो if this industrial worker was spending 1000 rupees last year, how much is he spending today? कितना प्राइस इसके लिए बढ़ गया है? इसके लिए प्राइस में have increased by 7%. ऐसे ही we had consumer price index for urban non-manual employees. Non-manual employees जो देखो इंडस्ट्रियल वर्कर्स या लेबरर्स मैनुअल वर्कर्स होते हैं. अब बैंक में स्टाफ है, वो सब नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज है. उनके लिए व्हाट इज सीपीआई? उनके लिए सीपीआई वाज कैलकुलेटेड सेपरेटली. फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर्स वर कैलकुलेटेड सेपरेटली. इनफैक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ रूरल लेबरर का एक कंपोनेंट होता था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर. गॉट इट? हु यूज्ड टू कैलकुलेट एंड पब्लिश दीस नंबर्स? देखो जहां पे भी लेबर इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल लेबरर, जहां पे भी लेबर इन्वॉल्व है, कौन कर रहा था? लेबर ब्यूरो. Why am I giving you this table? So that logically आप समझ पाओगे कौन क्या पब्लिश करता है. जहां पे भी फिजिकल वर्क इन्वॉल्व था, who calculates it? इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबरर. तीनों के केस में लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. It calculates it. Even today it calculates it. Even today it calculates it. But ये कौन करता था? Urban non-manual employee, CSO. CSO does it. CSO used to do it. But these indexes did not used to give us a clean, like complete picture of the entire population. एक एग्रीकल्चरल लेबरर के बारे में बता रहा है, एक रूरल लेबरर के बारे में बता रहा है, एक अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज के बारे में बता रहा है, एक इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में बता रहा है. बट इट वाज नॉट गिविंग अस अ इंडस्ट्री लाइक कंट्री लेवल सिनेरियो कि हाउ मच आर प्राइसेस गोइंग अप फॉर डिफरेंट लाइक एट द एंटायर कंट्री लेवल फॉर कंज्यूमर्स. तो इवेंचुअली वी केम अप विथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
अर्बन एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, और इन्हीं को कंबाइन करके बनाते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। एंड नाउ दीज आर नॉट ओनली फॉर लेबरर्स, मैनुअल वर्कर्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पब्लिश नहीं करता, कौन करता है? सीएसओ। जैसे अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज वाला सीपीआई कौन पब्लिश कर रहा था? सीएसओ। ऐसे ही सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, अब सीपीआई रूरल में क्या एग्रीकल्चर लेबर विल बी इंक्लूडेड? यस। रूरल laborers will be included? Yes. But will rich people be also included? Someone who's not a part of agricultural laborer, rural laborer, will they also be included? Yes. ऐसे ही सीपीआई अर्बन में rich people will also be included, poor people will also be included, manual industrial worker will also be included, urban non-manual employees will also be included, everyone would be included, and इन दोनों को combine करके we create CPI combined. CPI combined gives us a country level picture of कि in general जो consumers हैं, households हैं country में, उनके लिए how much are prices increasing. CPI combined of this year minus CPI combined of previous year divided by CPI combined of previous year will give us inflation at the country level. बात समझ में आ रही है? पक्का? Now in the past, yes. Yes. उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सेल में क्या चेंज आया, क्या चेंज नहीं आया, उसे ना आप एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हम जानना चाह रहे हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर, हाउ मच विल कंज्यूमर हैव टू स्पेंड मोर देन व्हाट ही वाज स्पेंडिंग लास्ट ईयर. नाउ if the producer side things have become expensive, if from producer side things have become expensive, will it be reflected in my prices that I buy? It will still be reflected in it. And because it is consumer price index, it is not producer price index or it is not any other price index, I have to consider what, how much is this consumer spending. And in this consumer expenditure anyways, if the price increase has happened at the sales level, that gets taken care of. But you may perhaps you are asking ki sir, I'm asking from the perspective of when you did survey, did you go to shopkeeper and ask कि कितना लोग कितने चीजों पे खर्च करते हैं? Your question was that? नहीं देखो प्लीज समझिए इसे, एक हाउसहोल्ड है, वो हाउसहोल्ड कितने पैसे खर्च कर रहा है डिफरेंट आइटम्स पे, वो यू कैन नॉट डिटरमाइन बाय गोइंग टू वन शॉप, बिकॉज दैट शॉप विल बी, दिस हाउसहोल्ड is not buying all its dal from one shop or all its भिंडी from one shop or all it's not going to उसका जो हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर का, वो एक शॉप से नहीं हो रहा ना. इट मे बी उसका एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर एक शॉप से नहीं हो रहा ना. तो भाई गोइंग टू वन शॉप एंड सेइंग कि बताओ एक आदमी कितना खर्चा करता है will not give you any picture. वो for that you have to go to the household only. Did I answer your question now? Okay. Let's come back. तो we have these many CPI indices which are important जो prelims में आते हैं. अभी हम PYQs में भी देखेंगे, उनका comparison भी पूछा है, किसमें क्या included है, किसमें क्या included नहीं है. तो we have CPI combined, CPI urban, CPI rural. ये CPI combined urban rural are published by CSO. Then we have CPI urban non-manual employees, that is also published by CSO. That's also published by CSO. फिर there are लेबर ब्यूरो, देयर इज लेबर ब्यूरो विच पब्लिशेस सम सीपीआई. कौन से? लेबरर वाले, इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबरर. इजी है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा क्या कौन पब्लिश कर रहा है. लेबरर वाले कौन कर रहा है? लेबर ब्यूरो. अगर ग्रुप कंज्यूमर पूरे कंबाइंड है, इट इज बीइंग डन बाय सीएसओ. एंड देन देयर इज होलसेल प्राइस इंडेक्स विच इज published by Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. Wholesale price index. अब wholesale price index में क्या होता है? We look at prices at the wholesale level, that is at factory level, at mine level.
Now I may be consuming coal. So when you will survey me, I'll say I bought coal in 10 rupees per kg and I consume 10 kg of coal. That is at the consumer level. तो consumer के लिए price कितना increase हुआ है? That is calculated at CPI level. But wholesale level पे coal का price कितना increase हुआ है? Will be calculated at mine level. Mine में coal निकालने में eventually final what was the expense? तो उसको तो आप कंज्यूमर का सर्वे करके नहीं पता लगा सकते ना, उसके लिए आपको इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई दैट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर. आर यू अंडरस्टैंडिंग द रैशनल बिहाइंड, लॉजिक बिहाइंड हु पब्लिशेस व्हाट? एल्स ना हम रट लेते हैं एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. अगर एग्जाम के टाइम तक रिवाइज नहीं किया, यू विल बी लाइक, एग्जाम में आ गया, यू विल बी लाइक यार रिवाइज करना चाहिए था, भूल गए. But you have to understand the reason why different things are published by different entities. And then even if you are not able to revise an exam, you will be able to apply the logic. Arey labor wala, I remember ye labor bureau. Consumers ka combined wala, where I cannot categorize consumer into different categories. Urban, rural combined or urban non-manual employees. वो सारा by CSO. And wholesale level पे, industry level पे basically, wholesale level में ऐसे we can also think it of industry level, mine के level पे, factory के level पे. तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. क्या बात समझ में आ रही है? Now we will study about these things, each of these indexes in more detail in the coming time. यहाँ पे बस मैंने summarize किया है for you to remember who publishes it. Every time we'll talk about an entity which publishes it. अच्छा, there are a few more things that we should know. देखो, before 2010-11 when CPI urban, CPI rural, CPI combined was brought in, उससे पहले CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइंड नहीं था. क्या था? CPI एग्रीकल्चर लेबर, CPI रूरल लेबर, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज एंड देन होलसेल प्राइस इंडेक्स. टिल दैट टाइम हम हेडलाइन इन्फ्लेशन या हेडलाइन इंडेक्स पता है किसे बोलते थे? जो WPI से कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज WPI was giving us a more holistic picture. WPI was giving us a more holistic picture. Otherwise CPI urban labor, CPI rural labor, CPI industrial worker or CPI urban non-manual employees was giving situation of only a few sections. So the term headline inflation was used for inflation calculated using wholesale price index. Wholesale price index for this year minus wholesale price index for last year divided by wholesale price index for last year into 100 before that. But today when we use the term headline inflation, what is headline inflation? Headline inflation ना जो न्यूज में आता है हेडलाइन में, भारत में महंगाई इतनी बढ़ी, that is CPI combined. Today when we use the term headline inflation, today the inflation that is reported today, the inflation that is being targeted by RBI is what? CPI combined. Why? Because CPI combined is giving us a better picture of how much consumer is spending on different things. Do we get this? सबको समझ में आ रहा है? Now let's come to a few more things that we should note carefully. CPI agriculture labor या CPI rural labor is used for determining the minimum wages and those for government's rural job under the MG नरेगा. Why? देखो, CPI agriculture labor, CPI rural labor से आप डिसाइड करोगे agriculture labor का expense has increased by 10%, 20%. तो MG नरेगा में वेज कितना इंक्रीज हो जाना चाहिए एटलीस्ट? What will help us in determining it? CPI agricultural labor or CPI rural labor. Does it make sense? Are we also able to understand the rationale behind it? Why CPI agricultural labor, rural labor will be used for that purpose? CPI agricultural labor is a subset of CPI rural labor and is used for revising minimum wage of agricultural laborers. CPI industrial workers is used for wage indexation in organized sector and government jobs. वेज इंडेक्सेशन जैसा पे आपको ना महंगाई की वजह से डियरनेस अलाउंस और ये सारी चीजें जब मिलने लग जाती हैं, वो इंडस्ट्रियल वर्कर को विल बी बेस्ड ऑन CPI इंडस्ट्रियल वर्कर.
Okay, we'll come to the concept of core inflation sometimes, but first let us go to consumer price index in a bit more detail. Let's understand consumer price index in a bit more detail. It is measuring, consumer price index measures what? Change in prices, increase in prices. So CPI measures the average change of prices paid by the final consumer for a basket of goods and services. Here we are not going at factory level. Here we are not going at mine level. Here we are going at final consumer, end consumer. उसके प्राइस एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया? हाउ मच मोर इज ही पेइंग नाउ, इज शी पेइंग नाउ? तो सीपीआई इज इक्वल टू वेटेड प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वेटेड प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100. तो विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर सीपीआई कितना है? तो सीपीआई इन बेस ईयर इज 100. इफ सीपीआई टुडे इज 180, इट मींस if in base year you are spending 100 rupees, today you are spending 180 rupees. If in base year you are spending 10,000 rupees, today you have to spend 18,000 rupees. CPI rural, urban and combined are the three new all India indices. We are calling it new because it did not exist earlier. Earlier what did we have? We have agricultural labor, rural labor, industrial worker and urban non-manual employees. मैनुअल तो वही हो गया ना, इंडस्ट्रियल वर्कर मैनुअल वाले हो गए. तो द इंडाइसेस सच एज सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर ओनली कवर्ड अ सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, whereas सीपीआई urban rural combined is giving us a more holistic picture. CPI rural urban combined cover all segments of population and gives a general idea about the price rise in the entire country. These are published at all India level as well as state wise levels also. जब आप डेटा देखोगे तो स्टेट लेवल पे भी डिफरेंट सीपीआई इन बिहार कितना बढ़ा, सीपीआई इन हरियाणा कितना बढ़ा, सीपीआई इन राजस्थान कितना बढ़ा, all those things are also provided. In February 2025, CSO Ministry of Statistics and Program Implementation brought some changes in how CPI is calculated. First it did was it changed base year. 2010 पहले base year क्या था? 2010 था. Now they changed base year to 2012. Okay, तो जो हम CPI is equal to 100 मानते हैं base year में, that is now for 2012. Basket of items and their weight also changed. नया consumer expenditure survey हुआ. Based on that, basket of item and their weight was also changed. Earlier we used what is known as unified reference period mechanism. Now we are using modified mixed reference period data of consumer expenditure survey 11-12. Now, what are these things? Let us understand it. देखो, when in 2004-5 survey was done, let's say we're all individual households. When in 2004-5 survey was done, I went to a household and I asked, yaar, this month, how much did you spend on wheat? How much did you spend on rice? How much did you spend on health? How much did you spend on education? This household gave me a number, this household gave me a number, this household gave me a number. Fine. उसके बेसिस पे मैंने सीपीआई में अलग अलग आइटम का वेट बना दिया कि households generally spend, consumers generally spend 50% of their income on food, 50% of the expenditure on food, 10% on this, 10% on this, 2%. इस तरह से मैंने वेट बनाया. But this had a problem. This method had a problem. What was the problem? Problem was when I went to this household and asked, how much did you spend on food? She was able to say, yeah. How much did you spend on education? So this month she may have only paid the school fee. So she said ki 1,000 rupees. But in reality, in the entire year, she is not only spending 12,000 rupees. Admission ke time, there is admission fee and all that stuff. Right? So the real number should be not be of only this month expenditure will not tell you on an average in a month how much you are spending. But if you are only using uniform reference period, सबका चीज एक महीने में पूछो, in last 1 month how much you have spent on something, it will not be able to give you a clear picture. Similarly, if she is asked in your household, how much did you spend on health? She would say 0. एक paracetamol का tablet खरीदा था 2 रुपए. But 3 months earlier, she may have spent 3 lakh rupees on some health. So if you ask in this month what was your expenditure, that is if you use uniform reference period for each kind of expenditure, the data that you may collect may not be as appropriate.
The data that you may collect is may not be as appropriate, but this was used earlier, uniform reference period mechanism. From there, we move to what? Modified mixed reference period mechanism. In modified mixed reference period mechanism, what we do is, for some things, we ask in last 7 days how much you spent. For some things, we ask in this month how much did you spend. And for some things, we ask in this year how much did you spend. So health, clothing, like we don't buy clothes every month. During festivals, during wedding seasons, we'll buy clothes. तो उसके लिए better reference will be an year. Health के लिए better reference will be an year. And उसको फिर आप divide कर लो कि in a month how much you're spending. For general food, जो घर में दाल रोटी सब्जी खा रहे हो, उसके लिए better reference would be 7 days. Because it doesn't change that much. For your rent, better reference would be month. In modified mixed reference period mechanism, what do? In consumer expenditure survey, we collect data for some items based on the expenditure of last 7 days, for some items based on the expenditure of last 1 month, for some item based on the expenditure of last year. क्या हमें समझ में आ रही है बातें? तो one thing that changed in the CPI calculation method was we brought a new year, 2012 base year. दूसरा, this consumer expenditure survey here in 2011-12, the consumer expenditure survey that was held, it was held on the basis of modified mixed reference period and not on the basis of uniform reference period. Then number of groups were also increased. Earlier we had 5 groups. Now जो pan tobacco intoxicants hai, it has been separated. Earlier it was included in the food category only. Pan, tobacco, daru are not part of food. Earlier earlier there were 5 baskets. Now we have how many baskets? 6 baskets where pan, tobacco, intoxicants have been separated. Then number of items in the basket, total number of items for which survey was done was also increased. We don't have to remember this number, but with time, more consumption happen, more items may come, some items may get ignored. जैसे people in the past, people may have spent on floppy disks. पर क्या floppy disk पे आप spend करते हैं? नहीं करते हैं. तो floppy disk as an item has to be phased out. Some new item has to be added. The weight of the core group, अभी core group की बात करते हैं. तो this is the weight that was finalized. This is for rural, this is for urban, and this is for combined. So in rural India, 54% of the expenditure happens on food and beverage. In urban India, 36% happens on food and beverage. And when we go for combined thing, how much expenditure happens on food and beverage? Combine करोगे उसका average तो 45 happens on food and beverage. तो अभी एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सीपीआई में INR कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सबसे ज्यादा वेट किसका है? फूड एंड बेवरेज का. Food and beverage has the highest weight. Then there are other items, pan, tobacco, intoxicants. You'll see pan, tobacco, intoxicants पे expense का 3% is spent on rural India, 1.3 in urban India. आप देखोगे रूरल इंडिया में थोड़ा सा तंबाकू और बीड़ी और इन सब का ज्यादा कंपोनेंट होता है. प्लस बिकॉज इनकम लेवल्स आर लो, there's a part of their expenditure, a percentage of their expenditure, this number comes out to be high. Clothing and footwear, 7.36% in rural India and 5.57% in urban India. Housing, rural India में housing पे ज्यादा, like in rural India, house rent और ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं है. People generally are living in their own houses. Rent and those things are absent, तो उसका कोई weight नहीं है यहाँ. Fuel and light, 7.94% in urban India, 5.58%. Miscellaneous, household goods and services, health, transport, communication, recreation, education, personal care and effects, it's 27% in rural India and 29% in urban India. Do we have to remember these numbers? No, we don't have to remember these numbers. But अब आप वो समझ पाओगे जो मैं आपको index calculate करना बता रहा था. In I calculated index using only 3 things. In reality, more than 400 things are used. Some food items, some clothing, and they are divided into these 6 baskets. तो पहले हम क्या करेंगे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के टाइम वी विल क्रिएट दिस इंडेक्स. रूरल इंडिया का अलग इंडेक्स, अर्बन इंडिया का अलग इंडेक्स, एंड देन
we will combine them to have a CPI combined. Then your weighted expenditure in base year, your weighted expenditure in any future year. So in any future year, your expenditure divided by your expenditure in base year into 100 will be CPI for this year. है ना? और हम हर बार ये नहीं देखेंगे कि we will not do survey every time to see this thing कि यार how much are you spending? We have done consumer expenditure survey once. We know कि you need 10 kg of wheat, 2 kg of 5 kg of coal, 5 kg of salt. उनके प्राइस कितने बढ़ रहे हैं? That will be done every month. Every time we'll see कि प्राइस कितना बढ़ रहा है, and based on that, the new thing would be created. Otherwise, how much items are you consuming? That happens in consumer expenditure survey, and that doesn't happen like every month or every time. Got it? बात समझ में आ रही है? Okay. So this was how CPI is calculated. Okay. Now there is also something known as weight of the core group or core inflation. अब अभी हमने ऊपर I had said कि I'll come back to it. Let's go back. Core inflation वाला concept. Let's understand. ऐसे inflation we understood. Price index of this year minus price index of previous year divided by price index of previous year into 100. Now let's understand what is core inflation. देखो अभी हमने जो CPI देखा उसमें there are various items. There is food, there is pan tobacco thing, there is rent, housing, there is miscellaneous things. All those things are there. Now इनमें से some items price are very volatile. For example, food. Tomato sometimes may be available in 20 rupees per kg, sometimes it's available in 200 rupees per kg. Or fuel, oil, crude oil, petroleum, natural gas, diesel. इनके prices depend a lot on what is happening outside India. Right? So when we have to see a pattern मतलब कि यार in general, what is the price rise in India's economy? What is the price rise in India's economy? When we have to consider that, उसमें ना this thing, food, sometimes prices are low, sometimes prices are high. It hampers the study of that pattern. It hampers the study of that pattern because this is very volatile. Fuel कभी बहुत नीचे चला जाएगा price, कभी बहुत ऊपर चला जाएगा. It will hamper our pattern of long-term study. The core inflation refers to inflation without considering food and fuel. Food and fuel को हटा दो, उसके बाद calculate करो. Because food and fuel are volatile. If you remove food and fuel, what is the general price trend in your economy? That is given by core inflation. Did we understand this? So, core inflation is the change in the cost of goods and services, but does not include those of food and energy sector or fuel sector. These items are excluded as they are very volatile and उनका temporary seasonal situation may also happen. Core inflation is studied to understand the long-term trend in price rise. Otherwise, finding a trend may be difficult. Or let me explain this in a layman language. I want to see कि from 2000 to 2020, what is the general trend in price level? तो CPI में calculate करता है ना? What is the general CPI वाला situation? तो I'm calculating CPI. It's going like this, but suddenly it comes like this because oil prices went down drastically. Then it's again growing, but then it went like this. तो हमारी overall study में ना these things are coming as aberration, and these things don't give us a long-term picture कि what is happening to CPI. So if we remove food and fuel वाले baskets, we are left with CPI core, and CPI core is able to give us a better picture of what is happening in the economy, the general pattern in the economy. So to study long-term trend, what do? We go for CPI core or core inflation. Do we understand this? Okay. So in the CPI calculation that we do now, एक और चीज जो चेंज हुई थी वो था weight of core group increased from 42% to
47%. That is, if I come here, core group क्या होगा? If you remove food and beverage and if you remove fuel, 45 or 6. How much is this? 45 and 6, 51, and then 8 and 8 is 1.6. 52.6 बचता कितना है? 47.3, 47.4, right? तो I'm saying जो बचा है that is core group. If you remove food and fuel, जो बचा है that is core group. Share of core group in the 2017 has increased. That is, in general, weight expenditure of consumers on food and fuel has reduced. In their weight of food and fuel has reduced. Whose weight has increased? Core part ka, food and fuel. Because with you will see, with socio-economic development, expense on food keeps on going down as people's income increases. When my income is only 100 rupees, I'll spend 70 rupees on food. When my income is 1000 rupees, I'll perhaps only spend 200 rupees on fuel. Right? So that is visible in the CPI also. That is what is being said here. The weight of core group has increased and weight of food and fuel has gone down. Core group, earlier food and fuel together used to constitute around 57%. Food and fuel earlier used to constitute 57%. Today food and fuel constitute 53%, 52%, 52.6%. फूड एंड फ्यूल के बाद जो बचा है वो क्या है? कोर. तो कोर का वेट इज गोइंग अप, कोर का वेट इज इंक्रीजिंग. आर वी क्लियर अबाउट दिस? वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके. ऐसे ही सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है, लेबर ब्यूरो करता है. what is the significance of CPI इंडस्ट्रियल वर्कर? पॉलिसी फॉर्मुलेशन में वेज कितना राइज होना चाहिए उसमें, या फिर डियरनेस अलाउंस पेड टू लार्ज नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज आल्सो डिसाइडेड बाय व्हाट? CPI इंडस्ट्रियल वर्कर. इसमें भी 2020 में सम चेंजेस वर मेड from CPI industrial worker series 2001 equal to 100. That is 2001 को base year मानने के बजाय now 2016 is the base year. Industries which are covered are these: factories, mines, plantation, public. So manual industrial worker have to be surveyed. Which industrial workers are being surveyed? These industrial workers are being surveyed, and this is roughly the weight situation. The food and beverage has weight of around 40%. Pan, supari, tobacco has weight of around 2%. Fuel and lighting 5.5%, housing 16%, clothing and footwear 6%, miscellaneous 30%, total 100%. Just worry about this number, but here also you will see share of food and beverages coming down. है ना? We can understand that with improvement in socio-economic condition that would happen. Share of fuel and light remains around 5-6%. अब देखो, fuel and light doesn't work like this. Fuel and light doesn't work like this. Why? Because when I'm poor, my consumption of electricity is much lesser. As my socio-economic condition improves, मैं एयर कंडीशनर भी खरीदूंगा, मैं रेफ्रिजरेटर भी खरीदूंगा, मैं माइक्रोवेव भी खरीदूंगा, मैं लाइट ऑन है तो कोई बात नहीं. बट व्हेन यू आर वेरी पुअर, यू आर लाइक हर चीज बचा के रखो. इन दस फ्यूल में इतना वो आपको ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखता है. when you become rich, you buy a car, you use more petrol, diesel, and thus फ्यूल में इतना चेंज नहीं दिखता. विद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कहां पे चेंज दिख रहा है बहुत क्लियरली? ओके, तो दिस इज सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर. ऐसे ही वी हैव सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर. इसमें भी सम चेंजेस वर मेड. तो इट मेजर्स द चेंज इन प्राइसेस ऑफ commodity basket consumed by rural laborers like agri laborer of village. Consumer price index for agricultural labor is a subject of CPI for rural labor. It is used for revising minimum wages for agricultural laborers in different states. Authority कौन है? Labor Bureau, Ministry of Labor is responsible for it. So I think I do not need to go in each and every index, but I would go into details of wholesale price index. Wholesale price index क्या है? कैसे काम करता है? That is something I want to cover. Wholesale price index. Now, in consumer price index, what did we do? We went to consumers and we did their expenditure survey. For measuring consumer price index, we went to consumers and did their expenditure survey. And then when we were measuring what is consumer price index for next year,
for next year, we looked at increase in price for consumers. कि भाई तुम भिंडी खरीद रहे थे 10 रुपए पर केजी पे, now you're buying भिंडी is lady finger, तो now you're buying lady finger at 12 rupees per kg. Okay, so what are you buying it at? Not what a farmer is producing it at. Farmer may be producing it at 5 rupees per kg only, last year also, this year also. But intermediaries have led to you paying higher prices. Consumer price index is worried about how much the final consumer is paying. Wholesale price index is ulta. Wholesale price index is focused on मंडी लेवल पे क्या प्राइसेस हैं, देख फार्मर्स को कितने पैसे मिले, या फैक्ट्री में किस रेट पे चीज प्रोड्यूस हो रही है, या माइन में किस कॉस्ट पे चीज प्रोड्यूस हो रही है. The index measures the change in price of commodities supplied to wholesale market. It is based on value of production adjusted for net import. एक इसमें समझते हैं, price of mineral at X mines, price of manufactured product at X factory and price of agriculture product at mandi price are considered for calculating WPI. X का मतलब क्या है? X mine, X factory prices means price exclusive of transport and other charge. Mine पे आपने किस प्राइस पे कोल प्रोड्यूस कर लिया है. नाउ ट्रांसपोर्टेशन में ऐड सम मोर कॉस्ट, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट. वी आर वरीड अबाउट एक्सक्लूसिवली माइन पे, एक्सक्लूसिवली फैक्ट्री पे, या फिर मंडी में. फार्मर्स कम टू मंडी एंड सेल देयर प्रोडक्ट एट मंडी. तो हाउ मच इज फार्मर, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर फार्मर, व्हाट इज द प्राइस एट विच फार्मर इज सेलिंग इट. होलसेल प्राइस इंडेक्स will measure changes in price here. Consumer price index, अब यहां पे प्राइसेस में नॉट इंक्रीज, बट स्टिल कंज्यूमर तक जाते जाते प्राइसेस में इंक्रीज. और यहां पे प्राइसेस में हैव इंक्रीज्ड, बट द आइटम्स विच आर विद कंज्यूमर्स वो पुराने प्रोडक्शन वाला है, एंड दस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नॉट इंक्रीज immediately. It may take some time. Do we get this? Fuel prices at wholesale level में increase, but government may be ensuring कि consumer को तो subsidized ही मिल रहा है. तो कंज्यूमर लेवल पे थिंग्स में नॉट इंक्रीज, यहां पे इंक्रीज, या फिर यहां पे थिंग्स में नॉट इंक्रीज, एट कंज्यूमर लेवल इट में इंक्रीज. द सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई numbers may show variation. Something may be going up, other may be, CPI may be going up, WPI may not be going up, CPI may be going down, WPI may not be going down, WPI may be going up, CPI may not be going up. ये वेरिएशन हो सकता है. There are many reasons for it. Okay, but let's look at some important things. ये PYQs में पूछे हुए हैं ये चीजें, ध्यान से पढ़ेंगे. 1, it captures inflation closest to producer and has a broader coverage of manufactured goods. It is capturing inflation closest to producer, ये तो समझ में आया, but it has better coverage of manufactured good than CPI. Why would that be the case? क्या CPI सारे manufactured goods को नहीं कंसिडर कर रहा? नहीं कर रहा. Why? Does every consumer buy machines for making clothes? जो टेक्सटाइल मिल्स में मशीन बन रही है, वो मशीन यूज हो रही है, क्या वो कंज्यूमर लेवल पे यूज होता है? नहीं होता. तो हाउ मच हैज इट्स प्राइस इंक्रीज्ड? कंज्यूमर सीपीआई पे इट इज नॉट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, बट एट डब्ल्यूपीआई लेवल इज इट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट? एंड दस WPI is having broader coverage of manufactured, broader when compared to CPI. Do we get this? Do you understand this? Second, it does not capture price inflation in services. Services को WPI consider नहीं करता. CPI में services are important component. हमने miscellaneous वाला part देखा, rent वाला part देखा. All those are kind of services, right? Transportation, banking, education, health, those are services. CPI में वो कंसिडर होता है एट होलसेल. while calculating WPI, सर्विस सेक्टर का प्राइस राइज और प्राइस इज नॉट considered at all. Wholesale price index is only about primary and secondary sector. It doesn't have the component of tertiary sector. How is it different from CPI? WPI has more manufactured item, as even capital goods are considered. Capital goods are taken care of here, included here. Capital goods may not be taken care of in consumer level. Not all capital goods may be taken care of there. Second, WPI does not include services. CPI includes services. WPI does not include services. CPI includes it. Third, ये तो जनरली डिफरेंस नहीं है, ये इट्स डन ऑन ईयर बेसिस, ठीक है.
इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्राइस। अब देखो, आप फैक्ट्री लेवल पे बात कर रहे हो, जब आपने फैक्ट्री लेवल पे बात करी तो अभी जीएसटी इज going to be applied on supply and eventually the buyer is going to pay it, है ना? तो indirect taxes have not been considered here, have not, whereas indirect taxes have been included where? When consumer buys it. This pen, the producer may have produced it in 10 rupees. अब इस पे GST लगा के it may be sold at 12 rupees. Final consumer will have to bear this GST also, and if GST is increased, final consumer के लिए price may increase. For at wholesale level, prices may not be impacted by that. Eventually, indirect taxes, who pays the taxes? Final consumer. It's indirect for that reason only. So here, indirect taxes are excluded from the price. Authority responsible, वो हमने समझ, we know that. Which is the authority for wholesale price index? Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. उसमें एक डिपार्टमेंट होता है DPIIT. What is DPIIT? Department for Promotion of Industries and Internal Trade. Okay, that department has Office of Economic Advisor. That department is under Ministry of Commerce and Industry. वो ये publish करते हैं. अभी 2017 में we made base year to be 11-12 and weight basket have also changed a bit. Currently this is the weight basket. Primary product, fuel, power, light and lubricant, and manufactured product. Here we do not have tertiary sector. Here we do not have tertiary sector, we know that, right? So primary products में what do we have? Primary products में we have प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग वाली चीजें, है ना? देन फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट्स, दिस इज इन हेयर, एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इज देयर. वो वेट थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैव द हाईएस्ट वेट, फॉलोड बाय प्राइमरी सेक्टर, फॉलोड बाय फ्यूल, पावर, लाइट एंड lubricants. This is a bit important. If you'll solve mocks, there also, if you will solve mocks there also, you will see these kind of questions there. PYQs देखोगे उसमें भी कभी-कभी ये चीजें हो जाती हैं. ओके, बात समझ में आ रही है? पक्का? तो इन WPI वेट सबसे ज्यादा किसका है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, more than 60%. More than 60%. Then primary products, more than 20%. Then fuel, light, power, light and lubricants, around 15%. एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है, चलता है, बट दिस इज ऑलमोस्ट 65%, दिस इज 20%, तो वो अराउंड 15% रह जाता है. 65, 85, अराउंड 15%. और इफ यू वांट टू रिमेंबर एग्जैक्टली, 65, 22 एंड 13%. बट ये याद रखना है. क्या याद रखना है? किसका कितना वेट है WPI में. CPI में इसे उठा दो. नींद आ रही है तुम्हें? जाओ मुंह धो के आओ. हाँ, ब्रेक पे देता हूँ, बस ब्रेक देता हूँ, 2 मिनट दे दो, ब्रेक देता हूँ. लेट मी कंक्लूड WPI, देन आई विल गिव अ ब्रेक. क्यों नींद आ रही है तुम्हें? है? मैं तमन्ना भाटिया वाला डांस कर दूं यहाँ? है? नाम क्या है? आशीष. अब आशीष मेरे बहुत बचपन का एक दोस्त है, मतलब केजी से जो मेरा दोस्त है वो है, तो सिर्फ गालियां वालियां नहीं दूंगा मैं. अभी आई स्पोक टू हिम अराउंड 6-7 years लेटर, अभी रिसेंटली, अभी कल ही उससे दोबारा बात हुई है, तो मैं तुम्हें, तुम्हारा नाम आशीष है, तो मेरा एक बचपन का एकदम क्लोज फ्रेंड जो था, आशीष भगासरा नाम था उसका, एकदम लंगोटिया यार वाला, जो मुझे कोई मारेगा तो वो आके पीटता था, उसको कोई मार गया तो मैं उसके नीचे सुई चुभाता था, वो वाला दोस्त, है ना? तो somehow काम वाम में ना हम बिछड़ जाते हैं. एनीवेज, लेट्स कम बैक. WPI वेटेज 65% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 22% प्राइमरी, फिर फ्यूल, पावर, लाइट, लुब्रिकेंट्स अराउंड 15%, लेस देन 15%, 13%. ये नंबर्स थोड़ा याद रखेंगे. देखो, फैक्चुअल थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स. अभी हम, वी आर ऑल डीलिंग विद फैक्चुअल एस्पेक्ट. अभी हम कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे. कॉन्सेप्ट्स, इन्फ्लेशन किसको कैसे इंपैक्ट करता है, ऑल दोज आर बेसिक कॉन्सेप्ट. राइट नाउ आई एम डीलिंग विद ऑल फैक्चुअल थिंग्स. व्हाई एम आई डीलिंग विद ऑल फैक्चुअल थिंग्स? बिकॉज इवन द फैक्चुअल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. विल कम टू कॉन्सेप्ट्स. ये डजंट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला पार्ट, तो हमें समझ में आ गया.
है ना. Then the changes that was made this time, our WPI food index was also compiled to capture the rate of inflation in food items. जैसे पहले हमारा core inflation वाला concept है ना, ऐसे यहाँ पे they also created a WPI index for just food items. कि इससे what are they measuring कि wholesale level पे फूड में कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है. उससे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अरे होलसेल लेवल पे प्राइस इंक्रीज इज नॉट दैट मच, बट कंज्यूमर लेवल पे फूड प्राइसेस आर इंक्रीज्ड अ लॉट. इट मींस इंटरमीडियरी बदमाशी कर रहे हैं. Right, and therefore WPI food index aspect also there. Then seasonality of fruits and vegetables has been updated. Like seasonality of food and vegetable getting updated means earlier some vegetables were available only for few months, and thus in their weightage in their part in WPI was only for few months. But with time, what is happening? More and more food or more and more vegetables and fruits are available throughout the year. जैसे earlier we used to see mangoes only in summers. Now कुछ mango हमें दूसरे सीजन में भी आ रहे हैं. Right, that's why seasonality getting updated. Item level aggregate for new WPI is compiled using geometric mean following the international best practices. So when we are calculating average rather than calculating arithmetic mean, what are we using? We are using geometric mean here. Then एक high level technical review committee का provision भी है. It says that you do not have to wait for big changes in WPI to bring changes in the items. Government has also set up a high-level technical review committee for a dynamic review in order to keep pace with the changing structure of the economy. आपको लग रहा है कि ये आइटम इज अब फ्लॉपी डिस्क्स आर नो मोर रिलेवेंट. अब उसके लिए अब 5 साल बाद जब WPI बदलेगा तब उसमें चेंजेस करो, नॉट नीडेड. This committee will be able to bring small changes in the methodology in between also. Okay, now let us, अच्छा यहां पे रुके क्या, ब्रेक ले, but it will only be a 15 minutes break. पहली चीज, it will only be a 15 minutes break, nothing more than that. And because we have to end our class at 1:30, तो हमें कम से कम सब्सटेंशियली उसके बाद पढ़ेंगे. ठीक है, तो I'll see you at 11:45. It's 11, चलो 20 minutes हो गया, 11:45 पे I'll see you there. Okay, thank you. और अगर 15 minutes दे रहे हो तो मुझे भी दे दो ब्रेक, है ना. थैंक यू. आधे बच्चे वापस नहीं आए अभी तक. आई कैन सी बस बैग्स रखे हुए. नहीं, बैग यहीं रखे हैं ना, तो विल कम बैक. तो अभी ना स्टूडेंट मैसेज्ड मी अ बुक, एनवायरनमेंट का कोई नया एडिशन का बुक आया था, PMF IAS करके किसी का, है ना. उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वो करना है, एंड आई मैसेज्ड हिम बैक, आई प्रॉमिस यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट व्हिच इज देयर इन द बुक विल ऑलरेडी बी इन योर नोट्स, है ना. दैट्स आई विल गो थ्रू, आई विल इंश्योर दैट आई फ्लिप थ्रू द एंटायर बुक and anything which is relevant for your preparation will be there. Okay, देखो 3 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं, एंड इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट. इन 3 के लिए आपको कुछ रेफर नहीं करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है. इफ यू आर पार्ट ऑफ द टारगेट प्रीलिम्स प्रोग्राम ऑल्सो, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ टच नहीं करना है. एवरीथिंग इज माई कंसर्न, आई एम अगेन रिपीटिंग इट. देन ये 3 तो मैं पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं. देन देयर आर इंटरनेशनल बॉडीज एंड मैपिंग, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, बिकॉज वो पूरा करंट अफेयर सेंट्रिक होता है. इवन फॉर दैट यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग. देन आई नो निखिल सर का एंशिएंट मिडिवल कल्चर पढ़ाने का तरीका, उसके लिए भी आपको कुछ टच नहीं करना है. अदर टीचर्स में रिकमेंड यू समथिंग और अदर थिंग, वो उन पे डिपेंड करेगा, बट ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको कुछ रेफर नहीं करना है. नाउ बाबू सर, मैं वास्ट क्योंकि आपको लक्ष्मीकांत देख लेना है, बिकॉज इन 9 लेक्चर्स इट्स नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू द एंटायर थिंग. उनके लिए करिए, बट जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, जो मेरा निखिल सर का यूएसपी रहा है कि यार अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, काम का है, तो हम क्या करेंगे रात रात भर. अगर आपको करने को दिया तुम कर लो, फिर हम क्या करेंगे. और फिर व्हेन यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग प्रॉपरली. अब देखो, इन्फ्लेशन मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें करा रहा हूं. मैंने आपको जब नेशनल इनकम कराया है, फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ नेशनल इनकम टू व्हाट इज द डेटा अभी, व्हाट इज द फिगर अभी, व्हाट इज द फैक्ट अभी, सब कराया है. तो let it be our concern, let it be our responsibility to ensure that everything that is needed would be there. Okay, आपको कुछ लगता है सर ये नहीं हुआ, just message me. All of you have my number, just message me that.
ओके, आई विल मेक श्योर दैट इट इज डन फॉर यू पीपल। तो कोई भी साइंस एनवायरनमेंट इसके लिए कोई बुक टच नहीं करनी है। यू मे लाइक और मे नॉट लाइक माई इकोनॉमी टीचिंग, बट आई प्रॉमिस यू साइंस और एनवायरनमेंट में यू विल लव इट। थोड़ा बोस्टिंग हो गया है, बट इकोनॉमी में थोड़ा रिसेंट टाइम से पढ़ा रहा हूँ। साइंस टेक एंड एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट आई हैव बीन टीचिंग राइट फ्रॉम 2016। ओके, इकोनॉमी में करंट अफेयर्स में पढ़ाता रहा था, एंड बिकॉज आफ्टर डेमोइंग अ लॉट ऑफ टीचर्स आल्सो वी वर लाइक इनसे तो नहीं पढ़वा रहा मैं। जब लेवलअप आईएएस में आप आए हो, एक चीज वी इंश्योर इज आई सिट इन डेमो, फाइनल डेमो ऑफ ईच एंड एवरी टीचर, एंड अगर पसंद नहीं आते हैं तो वो नहीं पढ़ाएंगे। एक सिंपल रूल है। तो इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस क्या होता है ना, 25% टीचर्स आर एक्सीलेंट, 50% टीचर्स आर एवरेज जिनसे पढ़ा जा सकता है, 25% आर जो टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं, जिन्हें बस रख लिया गया है। हमारे यहाँ ये लास्ट के 25% नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अच्छा टीचर नहीं है। मैं बोलता हूँ मैं खुद पढ़ा लूंगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनी टीचर कम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू हु इज नॉट सुटेबल फॉर यू, हु इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू। वो मेरी जिम्मेदारी है। पीएमपी में यू विल फाइंड ईच एंड एवरी टीचर टू बी एक्सीलेंट और अबव एवरेज। यू विल नॉट फाइंड इट दैट 25% कैटेगरी की यार वो हो रहा है। Fine, let's come back. So, why the methods of CPI WPI calculation needs to change regularly? So, I'm just reminding this because a student just asked me. कि सर should I be covering that book? मैंने वो PDF फ्लिप किया, मैंने कहा यार सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर रखी हैं, फिर भी I'll ensure सारी चीजें मतलब मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स में कवर कर रखी हैं, और फिर भी because some new edition of the book has come, मेरी जिम्मेदारी है I'll flip through it, I'll go through it and would ensure कि वो सारी चीजें आपके नोट्स में रहेंगी। आई प्रॉमिस यू दिस। जब आपका एनवायरनमेंट खत्म होगा, आई थिंक फरवरी में है आपके एनवायरनमेंट, पहले इसके बाद इकोनॉमी के बाद साइंस टेक वुड स्टार्ट, उसके बाद यू गो थ्रू द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दैट बुक एंड सी कि क्या कोई भी रेलेवेंट चीज रह गई है। आई प्रॉमिस यू नहीं रहेगी। ओके, तो डोंट वरी अबाउट कवरिंग सम बुक, नॉट कवरिंग सम बुक। जो बच्चे करंट अफेयर्स में है, जिस दिन मैं बोलूं करंट अफेयर्स खत्म हो गया, उस दिन उठा लेना मार्केट से पीटी 365, ये वो जो भी, एंड देन कंपेयर कि क्या कुछ रह गया है। उससे पहले डोंट वरी अबाउट इट। आई एम डूइंग इट, नो, आई विल बी डूइंग इट। ओके, द यूएसपी that I wanted to create always was the biggest problem that I faced in my preparation was मैं ये मैगजीन पढ़ रहा था, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ये बुक पढ़ रहा था, और जब रिवीजन करने का टाइम आता था तो मैं क्या करूं? फिर आधी चीजें रिवाइज हो पाती थी, आधी चीजें रिवाइज नहीं हो पाती थी, और दिक्कत होती थी। फिर पता है क्या होता था, हर सोर्स से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ऊपर ऊपर वाली चीजें हैं, वो तो हर सोर्स में दी होती है, वो मुझे आती थी। थोड़ा भी इन डेप्थ, क्योंकि वो इफेक्टिव एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करने से होगा, वो नहीं आता होता था। When I started teaching, I decided this कि my students will refer to one source, चाहे वो सोर्स बड़ा हो जाए, but they should need to go through only that one source. They should not need to go through 5 different sources कि एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक मैगजीन पढ़नी है, पर एक मैगजीन काफी नहीं होती। अच्छा, पीटी 365 काफी नहीं है, चलो इनसाइट वाला भी पढ़ लेते, उसमें फिर आखिरी में कोई रिवीजन नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक रिवाइज कर पाते हो, घबराए हुए रहते हो ये दूसरा वाले से कुछ इंपॉर्टेंट ना छूट जाए, और फिर हमारा एग्जाम में साइकोलॉजिकल कंडीशन भी सही नहीं रहता, बिकॉज वी हैव नॉट रिवाइज थिंग्स प्रॉपर्ली, एंड परफॉर्मेंस भी सही नहीं होता, बिकॉज वी हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो एक ही सोर्स, कीप गोइंग थ्रू अगेन एंड अगेन, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। मैं इंश्योर करूंगा कि जो भी बच्चे करंट अफेयर्स में है, मैं आपको अप्रैल में भी अपडेट्स दे दे के आपको क्लासेस करके, सैटरडे संडे क्लासेस करके अप्रैल में, बस वीकेंड्स पे जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी वो रह जाएंगी, वो कर करके आपको सारी चीजें अपडेट करके देंगे। ठीक है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गॉट इट? तो कोई भी ऐसी चीजें नहीं करे। दूसरा, एक और चीज, आई कीप गेटिंग मैसेजेस, सर शुड वी जॉइन एनी मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स? भैया, मेंटरशिप प्रोग्राम्स ना, ये सिविल सर्विसेज इंडस्ट्री का सबसे नया और बड़ा स्कैम है। आई टेल यू द मेंटरशिप प्रोग्राम मॉडल कैसे काम करता है। मैं आई एम इन दिस बिजनेस, और बहुत सारे लोग आके मुझे प्रपोज करते हैं कि अब ये इस तरह का प्रोग्राम रन करना है। मेंटरशिप प्रोग्राम का मॉडल बताता हूं आपको, कैसे लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। देखो, आई स्टार्ट अ मेंटरशिप प्रोग्राम, मैं बोलूंगा कि संतोष सर लेड मेंटरशिप प्रोग्राम है।
Many of you would come to join the mentorship program. 500 बच्चे आए जिन्होंने mentorship program join किया, ठीक है? It's impossible for me to mentor 500 students. What I'll do, I will choose all those students who have already given interviews, who have written mains. वो ऐसे 30-40 बच्चे होंगे, मैं उनको लेके खुद मेंटर कर रहा हूँगा, and then I will create a team of people who will be mentoring other students. जो टीम ऑफ पीपल आर themselves not good, वो जिसको मेंटर कर रहे हैं उनको सही से गाइड भी नहीं कर पाते हैं। पर फिर आउट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स दैट आई वाज मेंटरिंग, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैड ऑलरेडी गिवन इंटरव्यूज और ऑलरेडी रिटन मेंस एंड दे वर वेरी गुड एट राइटिंग, उनमें से 15 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर उन 15 लोग से यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी बनवाई जाएंगी। संतोष सर के मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम सेलेक्ट हुए, उससे पहले ये दिक्कतें थी, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और आप सब सोचोगे संतोष सर का मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ज्वाइन कर लेते हैं। पर आपको मेंटर संतोष सर मिल ही नहीं रहे। आपको मेंटर कौन मिल रहा है? आपको कोई मेंटर कभी कभी आपसे कम क्वालिफाइड वाला मिल रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में रिफंड पॉलिसी नहीं। There should be a well defined refund policy. वो एक मतलब if you do not refund students money when they say कि मैं I have done इतना क्लास और अब मैं नहीं करना चाहता, मेरे पैसे बाकी रिफंड कर दो, then you are stealing their money. You are thief. I strongly believe in this. अगर एक बच्चे ने आपको फीस दी है 4 महीने की कोर्स के लिए और वो 10 दिन बाद बोलता है कि सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो एक पोर्शन काट के बाकी पैसे अगर आप उसके वापस नहीं कर रहे हो तो आपने किसी के पैसे चोरी कर लिए हैं, क्योंकि वो आपसे सर्विस नहीं लेना चाहता फिर भी आपने उसके पैसे लेके रख लिए, तो चोरी कर रहे हो ना। तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे, उसके बाद एक 10 दिन बाद यू विल रियलाइज कि यार जो मुझे मेंटर कर रहा है वो खुद ही गोलू है। और फिर क्या होगा? यू विल आस्क फॉर रिफंड, बोलते वी डोंट हैव एनी रिफंड पॉलिसी। हाउ कैन यू नॉट हैव एनी रिफंड पॉलिसी? दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है भाई। जब कोई आपसे सर्विस नहीं लेना चाह रहा है तो आप रिफंड करो, राइट? तो ये सारी चीजें ना थोड़ा सा ध्यान रखो कि मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर ले। मैं बैठा हूं यहाँ पे, अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ, आई विल मेंटर यू, आई विल टेक सम जूम्स। देखो कॉमन मेंटरशिप प्रोग्राम क्या होता है, वो ये होता है ना कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर पार्ट ऑफ पीएमपी, डू यू नो क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है? आज शायद आपका टेस्ट के शेड्यूल भी डल जाएंगे, राइट? आपका टेस्ट का शेड्यूल भी डल जाएगा, यू विल नो एग्जैक्ट शेड्यूल, यू विल नो दोज आर इन सिंक विद योर क्लासेस। डू योर क्लासेस, इन क्लासेस वी आर डूइंग पीवाईक्यू, डू योर वीकली टेस्ट्स। If you are able to complete all this, do other tests too. फिर फुल लेंथ टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट आ जाएंगे, उसके बाद आरटीएफक्यू आ जाएगा। यही करना है प्रिपरेशन के लिए, कुछ स्पेशल नहीं करना है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू हु मे नॉट हैव बीन एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम इन लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स, अपना पेपर लेके आ जाओ। On Saturday, Sunday, this week I don't have any classes. I'll put some time. Come bring your paper जो आपने लास्ट 2024 अटेम्प्ट का दिया था। I'll sit with you and analyze क्या गड़बड़ हुई थी। But do one thing, if you're coming with your paper, एक चीज जो पहले से करके लाना, वो ये करके लाना कि let's say this is question number 1, this is question number 2, ऐसे जो नंबर लिखे ना वहां पे put a big tick mark or a big cross or a big zero if you have made it right, if you have made that question wrong, or if you have not attempted the question. If you have not attempted the question, do this so that मेरे को पता रहेगा किस बच्चे का पेपर। फिर मैं जानता हूं कि मुझे कौन से क्वेश्चन एनालाइज करने हैं, समझने हैं कि इस बच्चे के सिलेक्शन में कहां दिक्कत है, इस बच्चे ने कहां गड़बड़ करी है। तो मैं सैटरडे को एक टाइम स्लॉट अलोकेट कर दूंगा। जनरली संडे को मेरा इंटरव्यू का क्लास होता है, इस टाइम इस बार शायद आईआर वाले सर लेंगे इंटरव्यू वाले बैच में क्लास। तो सैटरडे को आई एलोकेट सम टाइम स्लॉट, वो आप यहाँ पे ब्लॉक करके आ सकते हो। ऑल्सो कीप सम जूम सेशंस। बट इन मेंटरशिप प्रोग्राम्स के चक्कर में मत पड़ना, चाहे आपको ईयर लॉन्ग प्रोग्राम लेना हो, प्री और मेन सबके लिए, चाहे सिर्फ प्री के लिए पढ़ना हो, चाहे विल फाइंड अ सोल्यूशन। डू नॉट पे 50,000, 70,000, 80,000 रुपीज इन दीज
mentorship programs. Oh, it has become a fad over the last 5 years, but I have told you the model. The model works like that. एक टीचर वो टॉपर बोल देगा, इन सर ने तो मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया. दैट मे बी ट्रू ऑल्सो. दैट टीचर, जैसे मैं एक बच्चे के अगर सीधा गाइड कर रहा हूं तो अगर हर वीक उससे बात कर पा रहा हूं तो क्या होता है कि इंप्रूवमेंट हो सकता है. बट कोई भी अच्छा टीचर, उसके पास इतना टाइम रहता नहीं कि वो 500 बच्चों को गाइड कर पाए. तो इन रियलिटी दैट पर्सन ओनली गाइड्स 15-20 स्टूडेंट्स, बट 500,000 बच्चों का एडमिशन करा के ये हो रहा होता है. ठीक है. दूसरी चीज जो जो ये होती है, इसका होता है कि डोंट फॉल. अरे इफ यू आर अ टीचर एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटर योर स्टूडेंट्स, देन गड़बड़ है ना. I should be available for mentoring you people. Why should you need to join a separate mentorship program at LevelUp IAS? Why should you need to do that? फिर तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा ना अच्छे से. अगर मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं नहीं, यहां पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करो. मेंटरशिप प्रोग्राम मेंटर करो ना भाई, तुम टीचर हो. But there's a, like, we are also doing business, but there's a difference between a business which involve teaching and a business which involve सब्जी सामान बेचना, है ना. यहाँ पे आप टीचर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस क्लास के 3 घंटे में खत्म नहीं हो रही है. इट्स इंपॉर्टेंट. वाई डू आई गिव माई नंबर टू यू पीपल? इट्स इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि बच्चा जब भी परेशान हो, सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो मैसेज कर पाए. मैंने आपसे बोला ना, मेरे को 1 बजे भी मैसेज आया, मैंने कई बार रिप्लाई कर दिया है, मैं वो देख रहा होता हूं तो. राइट. तो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप. ये कोई अलग से किताब तो पढ़ लो, वो तो फिर भी ठीक है, बट कहीं पे 50,000 80,000 रुपीज दे के ये सारी चीजें करना नहीं करना है. बिल्कुल नहीं करना है, कभी नहीं करना है. बात समझ में आ रही है? नेवर डू दैट. ओके. एंड फॉर द 4 सब्जेक्ट्स आई हैव टोल्ड यू, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, एंड ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल बॉडीज एंड मैपिंग. कुछ और सोर्स भी रेफर नहीं करना है, हम कराएंगे. सारी चीजें हम करा के देंगे. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सॉरी ज्योग्राफी पॉलिटी में ऐसा है कि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो 9 डेज में टीचर में कंप्लीट समथिंग एंड मैं आस्क यू कि एनसीईआरटी भी रीड करना साथ में, या लक्ष्मीकांत भी रीड करना साथ में. डू दैट. ओके. अब देखो, निखिल सर कुड हैव आल्सो डन दैट कि सिर्फ 9 ही क्लास लेते और बोलते कि एनसीईआरटी रीड कर लो. निखिल सर ने बोला मैं 15 क्लास लूंगा. हाँ, he said that मैं 15 क्लास लूंगा. I don't want to trust these people के खुद से रीड करके समझेंगे. मैं सिस्टम, तो उन्होंने लिया ना, उन्होंने ज्यादा क्लास लिया. आपके जीएस फाउंडेशन में इतना आपने आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा होगा, इतने डिटेल में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा जितना दैट पर्सन टॉट यू. राइट. तो बट इफ वी स्टार्ट डूइंग इट फॉर एवरी सब्जेक्ट, देन दिस विल बिकम अ 6 मंथ प्रोग्राम, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. इसीलिए जिसको हम बोल रहे हैं कि इसमें कुछ और चीजें नहीं पढ़नी है, प्लीज मत पढ़िए. लेट मी कंप्लीट दैट थिंग. एंड देन ये जो 7 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जो मैं आपको कोर यहां पे करा रहा हूं, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो थ्रू ऑल द रेलिवेंट थिंग्स, एंड कुछ मिसिंग होगा तो मैं इसे और ऐड करूंगा. बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इन 7 टॉपिक्स को जो मैंने फर्स्ट डे बोला है, उसमें विद इन योर पीएमपी आई विल कवर एवरीथिंग. ओके, लेट्स कम बैक. हाँ, व्हाई द मेथड ऑफ सीपीआई डब्ल्यूपीआई कैलकुलेशन नीड टू बी चेंज. जैसे हम रेगुलरली बदलते रहते हैं ना मेथड को, हमने बोला सीपीआई में बेस ईयर चेंज हुआ, बास्केट ऑफ गुड्स चेंज हुआ, है ना. व्हाई डिड वी चेंज इट, और जो भी रिसेंट चेंजेस हुए उसके क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. वन, द चेंज इज एम्ड एट कैप्चरिंग द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी. आवर कंजम्पशन पैटर्न हैज चेंज्ड. What consumer was consuming way back in 2000 and what consumer is consuming in 2011-12, that is different. And consumer price index में price increase should reflect that item, not other item. Then keeping the method in sync with international standards. So over the time, what has happened after 1991, we have tried to ensure that because we have gone for liberalization, privatization, globalization reforms, there is international comparison which is made. So if the methods used are similar, that would be easier for comparison, and that's why we try to get into sync with the international method. Then it also leads to changes in GDP number. Why हमारा CPI WPI का calculation leads to changes in GDP number? Do we understand deflator?
Deflator was what? Nominal GDP divided by real GDP. Right? कई जगह डिफ्लेटर का काम कौन करता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स. In several sectors, in that sector, nominal GDP is this. What will be the real GDP? The real GDP is divide that sector by wholesale price index का inflation. That will कई जगह, not for the entire economy. Please understand, WPI cannot act as deflator for entire economy. CPI cannot act as deflator for entire economy. Deflator is all, GDP deflator is altogether different thing, because GDP deflator is considering the entire GDP, whereas CPI is considering only things which are consumed by final consumer. WPI is only considering goods, it's not considering services. So they cannot be considered deflator for the entire GDP. But for some sectors, what can act as inflator or deflator? WPI. अगर WPI 20% से inflation has risen by 20%, तो आप उसे 1.2 से डिवाइड कर दोगे and nominal GDP को आप उस सेक्टर के nominal GDP को you will divide by 1.2 and you will get what? You will get real GDP. Nominal GDP divided by real GDP was deflator. So for some sectors, WPI can act as deflator for some sectors, not for entire GDP, and thus GDP number भी change हो जाता है. As you change the WPI mechanism, can GDP number can change? Yes. So WPI is used as deflator for many sectors of the economy for estimating real GDP, and the earlier GDP estimations were based on the inflation calculated in 2004-5 base. Now inflation is being calculated with a new base. Technical review committee will also in WPI, new WPI system, there is a provision of technical review committee. Do you remember a technical review committee बनाया गया so that dynamic changes will keep happening? So this technical review committee, we're talking about what is the significance of these changes. This technical review committee will ensure that things are happening in dynamic manner. You do not have to wait for changes to occur 10 years later. Some changes would dynamically keep occurring. Okay, let's go into the difference between CPI, WPI and deflator, GDP deflator. तीनों के बीच में differences समझते हैं. देखो, CPI measures prices at consumer level. WPI is measuring it at wholesale level. And GDP is measuring prices of final goods and services. पूरी country में जितना भी goods and services produce हुआ है, उसका GDP deflator will be measuring कितना price rise उनमें हुआ है. Okay. CPI includes services, WPI does not. Does it make sense? Easy? Does GDP deflator include inflation in services? क्या GDP deflator services को include करेगा? GDP deflator पूरी GDP को consider कर रहा है. In पूरे GDP are services there? In the entire GDP are services there? Yes. GDP is what? Final value, market value or monetary value of final goods and services. So services are there, right? What is फिर से एक बार. GDP deflator is nominal GDP by real GDP. Real GDP is based on what year's prices? Base year's prices, right? तो यहाँ पे जब GDP तो this is deflator. तो deflator in a way is telling you base year से कितना प्राइस बढ़ गया है, base year के प्राइस से कितना प्राइस अभी ज्यादा है. In a way it is telling you that it is, if it is 1.4, what does it mean? That base year में things something if our production was 100 rupees, 100 rupees का production होता, sorry, base year के price के basis पे if our production is of 100 rupees, today it's appearing 140 rupees. Why? Because of increase in prices. So in a way it is measuring increase in price only. But is it measuring increase of price of only goods or of service or of both? Because in GDP both the things are involved. बात समझ में आ रही है? Okay. So CPI includes services, WPI does not. Deflator includes. CPI includes impact of indirect taxes, WPI does not. CPI तो final consumer का price है. WPI does not include indirect taxes. It does not consider indirect taxes. What about GDP deflator? Does it consider indirect taxes? Yes. GDP deflator अब क्या होगा? अब हम GDP कैलकुलेट कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे, which is GDP at factor cost plus indirect taxes minus
सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स को उसने कंसिडर किया है इन फाइनल जीडीपी व्हेन वी आर कंसीडरिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन कंसिडर्ड देयर। In the past, when we were considering GDP at factor cost, at that time GDP deflator may not have considered indirect taxes, but right now it is. GDP deflator will consider indirect taxes too. तो मतलब price change में आकर because of changes in indirect taxes also. Okay. WPI also includes capital goods, goods not directly consumed by consumers. CPI सिर्फ consumer जो consume कर रहा है वो ना, तो while CPI and WPI both are considering goods, WPI सर्विस को कंसिडर नहीं करता बट WPI गुड्स को कंसिडर कर रहा है। बोथ CPI एंड WPI आर कंसिडरिंग गुड्स फॉर मेजरिंग प्राइस राइज, बट गुड्स में भी CPI विल नॉट कंसिडर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मींस एक मशीन प्रोड्यूस हो रहा है देश में, प्रोडक्शन तो हुआ देश में उस मशीन का, बट दैट मशीन इज नेवर गोइंग टू बी बॉट बाय फाइनल कंज्यूमर। That machine is not going to. So in CPI it will not have any weight, but in WPI will it have weight? Yes, at wholesale level we are producing it. Okay. Both CPI and WPI take into consideration imported goods, but GDP deflator does not. Imported goods, GDP क्या है? Goods and services produced within the country, within the territory. जो goods हम import कर रहे हो तो कहीं और produce हुई ना, that is not part of our GDP. तो GDP deflator में भी that will not be considered. But CPI कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है उसमें डू इंपोर्टेड गुड्स आल्सो कम? होलसेल लेवल पे थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल, डू इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज कम, गुड्स कम देयर होलसेल लेवल पे? यस। ऑयल, अब होलसेल लेवल पे ऑयल किस रेट में मिल रहा है? इट आल्सो इंक्लूड्स द इंपोर्टेड वर्जन। तो व्हाइल बोथ CPI एंड WPI आर कंसीडरिंग इंपोर्टेड थिंग्स, उनका प्राइस राइज, जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉट कंसीडरिंग दैट। डिफरेंसेस समझ में आए हैं? तो when you will revise this, rather than cramming this, understand the reasons behind it, understand the logic behind it. Cram करना बहुत difficult होता है। Cram, like there are some facts that we'll try to remember. India's GDP is this much, but in this thing you should not need to remember a single thing. In this entire 5-6 points जो हमने पढ़े हैं, read them and understand the reason behind it. Got it? ओके। अब देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स के जो इन्फ्लेशन होते हैं दैट में वेरी। जैसे दिस इज सम डेटा, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर CPI वाला डेटा, यू विल सी CPI वाज 2%, 4%, 6% come down, whereas wholesale price index even went into negative. Wholesale price index was lower. So basically there is a variation in CPI inflation and WPI inflation. Now एक ideal scenario would be something like this, if at wholesale level prices are increasing, at consumer level also it should increase. If at wholesale level prices are decreasing, at consumer level also inflation should be coming down, right? But it is not happening. There is variation between wholesale price inflation and consumer price inflation. Why is it so? What are the reasons which brings differences between CPI inflation and WPI inflation? That is why retail inflation becomes higher than wholesale inflation sometimes. In what are the reasons behind retail inflation remaining over wholesale? It's not that retail inflation will always be, or consumer price index पे जो retail inflation means consumer जो consume कर रहा है उस level पे inflation. It is not necessary that its CPI will always be higher than WPI, but we see several scenarios where CPI inflation is higher than WPI inflation. What can be the reasons? One is high transaction cost. देखो wholesale पे things have been produced, then intermediaries, and in this when transaction is taking place, if it is expensive, by the time it reaches retail, even here prices are going down. By the time it reaches retail, by the time it reaches customer, the prices may actually be higher. तो wholesale level पे prices are lower, but still consumer level पे prices can be higher, or consumer level पे prices may increase if the transactions increase. Then weak infrastructure system, logistic cost, etc. are high. It will lead to weak infrastructure. Will lead to what? High transaction cost. Then weak information system. What is this weak information system? देखो, I'm producing things cheaply. Farmers are producing tomatoes at 5 rupees per kg, but final consumers are not aware कि tomato prices are going down.
and final consumers are still being sold prices at very high level. और सब्जी मंडी में prices कम हो गए, but the retailer when they go to sabji mandi and they are not sure about if the mandi prices have gone down or if the prices at which wholesaler are buying things have gone down, this retailer will keep on buying it at higher prices and will keep on selling it at higher prices. क्या हमें बात समझ में आ रही है? Okay. Poor marketing facilities. When marketing facilities are poor, देखो, if marketing facilities were good, what would have it led to? It would have led to many players being there, more competition being there. When marketing facilities were good, then हम बोलते हैं अग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है? अग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि मार्केटिंग अच्छी हो. मार्केटिंग अच्छी होने से फार्मर्स विल गेट हायर प्राइसेस एंड कंज्यूमर्स विल गेट लोअर प्राइसेस. अभी क्या है? फार्मर्स आर गेटिंग लोअर प्राइसेस, कंज्यूमर्स आर गेटिंग हायर प्राइसेस एंड सारा प्रॉफिट किसको मिल रहा है? इंटरमीडिएरीज को. Huge margin for middlemen, collusion among traders, poor competition. Poor competition can also be reason for very high inflation at retail level but low inflation at wholesale level. Asymmetry in the transmission of price signal. ये actually weak information system का ही बात है. Weak information system may lead to this asymmetry. Okay, so these are some of the reasons which may lead to what? Which may lead to the differences between consumer price inflation and wholesale price inflation. Yeah, reasons for sometimes consumer price inflation remains higher than wholesale price inflation. Now, there can be a scenario, just एक second दे दो बेटा, there can be a scenario where wholesale price inflation is higher than consumer price inflation. Wholesale पे चीजें ज्यादा महंगी है when compared to ज्यादा महंगी नहीं, wholesale level पे prices are increasing more than what is increasing at retail level. Wholesale level पे we see last year के comparison में prices are 5% higher. But in the same month when we see at the retail level, prices have not increased that much. What can be the reasons behind it? बेटा हाई सप्लाई होता तो होलसेल लेवल पे भी तो प्राइस कम होते नहीं. Subsidies can be one thing. Government ensuring कि while fuel prices have gone up, government is ensuring that retailer को प्राइस ज्यादा नहीं मिल रहा है. Customer को eventually it is available in lower prices. Subsidy can be one reason. Other reason can be transmission lag. Transmission lag क्या? While I'm importing something and that import is available at very high prices, but this high price thing that I've imported, it will be available to customers 3 months later. तो 3 months later उसके लिए price बढ़ेगा. अभी what is available to customers? The thing that I already have. तो retail inflation में this inflation may not be visible, while wholesale WPI में this inflation would be higher. है ना? तो ट्रांसमिशन पीरियड जब ज्यादा होता है किसी चीज का, that may also lead to what? It may also lead to retail inflation remaining lower and wholesale inflation at WPI remaining higher. क्या बात समझ में आई है? Okay. Now, sorry? Yes. उसी वजह से ट्रांसमिशन डिले होने में एक कारण वो भी हो सकता है ना, बफर स्टॉक पड़ा हुआ है. प्राइमरली वो होता है. Okay. Now, there are a few other terms that we want to understand. Inflation is what? Inflation is increase in prices. Inflation is increase in prices. Today something is available at 10 rupees. The same thing a year later is available at 11 rupees. We say price have increased by 10%. Today something is available in 100 rupees. Next year that is available in 120 rupees. We say price has increased by 20%. This was inflation. Or we can say positive inflation. Like inflation is increasing at positive rate. So prices are increasing every year. Deflation उसका उल्टा होता है, नेगेटिव इन्फ्लेशन. मतलब टायर में हवा निकल गई तो टायर हैज डिफ्लेटेड, प्राइसेस हैव कम डाउन, इन्फ्लेशन इज नेगेटिव. तो नेगेटिव इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन. नेगेटिव इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन. देन रिफ्लेशन, एक और टर्म है रिफ्लेशन. व्हाट इज रिफ्लेशन?
Reflation is prices like inflation is negative. Yeah, inflation is very low, 0%, 1%. But low inflation isn't. देखो हमने कल बोला था, some inflation is good for economy. कल नहीं. In the previous class we said कि GDP growth rate is associated with inflation. Some inflation should be there. If inflation is negative, then that is not good for economy. Producers will be like, we'll be producing something, but by the time we produce it, its prices are going down. So some inflation is good, and that is why when inflation is very low, 0%, या negative में, government takes measures to increase inflation. When inflation is negative or when inflation is, let's say, at 0%, government will try to take measures to increase inflation. This is called reflation, deliberate action of government to increase the rate of inflation. समझ में आई बात? Deflation, negative inflation. Reflation, efforts by government to increase the rate of inflation. So it may be like आपसे पूछा जाए कि last year inflation was -4%, this year it is -2%. Is it a situation of reflation? Yes, it may be a situation of reflation if government has taken measure to increase. फिर -2 से वो 0 जा सकता है, 0 से वो 2% जा सकता है. तो 0 से 2% हुआ है. Is it inflation? Yes, it is inflation. Is it reflation also? Yes, if government is taking voluntary measure to increase inflation, that is reflation. Okay, then disinflation. Disinflation is decreasing rate of inflation. That is today this year price of a product increased by 10%. Next year it is increasing by 8%. Next year it is increasing by 4%. Next year it is increasing by 2%. It is increasing every year. So inflation positive hai. But rate of inflation is coming down. 10%, 8%, 6%, 5%, 4%. Rate of inflation is coming down. This is called disinflation. This is called disinflation. Okay, the charu terms I hope we have understood. Inflation is positive increase in prices. Deflation is negative inflation. Reflation is when efforts are taken to increase inflation. Disinflation is when inflation is there but inflation is decreasing. When inflation is there but inflation is decreasing. This is disinflation. Okay, now there is a concept or there is something known as Phillips curve. Phillips curve को ना there was this economist A.W. Phillips. He represented this data and he showed that in economy when the inflation rates were very high inflation rates, at that time unemployment is lower. देखो ये वाला point देखो, ये वाला point, this point is representing this and this. Inflation is very high but unemployment is less. Unemployment is इस वाले scale पे unemployment है, unemployment is less. But when inflation is low, unemployment is high. When inflation is और भी कम, inflation negative है, unemployment levels are higher. तो Phillips curve shows that inflation जब ज्यादा होगा, employment भी ज्यादा होगी या unemployment कम होगी. Phillips curves tell us, or this study told us, कि when inflation is high, unemployment would be low. What is the idea behind it? Idea is when inflation is high, it means product बहुत सारा demand में, तभी तो prices ज्यादा है. So producers will try to produce more of it. When they produce more of it, what would they do? They will hire more people. So when inflation is high, unemployment is low. When inflation is high, unemployment is low. When inflation is low, unemployment is high. Inflation आप negative कर दो. Negative, the producer will not be producing much. I told you, some inflation is needed for economic growth. So when inflation is negative, producer will reduce their production कि यार prices तो कम ही होने वाले, unemployment will keep going up. This is Phillips curve. He suggested this correlation way back in 1950 when he plotted this data कि at 10% inflation, what is the rate of unemployment? At 5% inflation, what is the rate of unemployment? Unemployment increased. At 2% inflation, what is the rate of unemployment? Unemployment फिर से और increased. At inflation being negative, unemployment was very high. This is Phillips curve.
Did you understand? Phillips curve क्या है? But Phillips curve was proven wrong in 1970s when stagflation occurred. Now let's understand what is stagflation. Stagnation plus inflation. Stagnation plus inflation. इसको हम साथ में क्या बोल रहे हैं? Stagflation. Stagnation is economy not doing well, economy becoming stagnant और economic growth remaining negative. वो situation क्या होता है? Unemployment high रहेगा. If economy is not doing well, will unemployment be high? If economy is not doing well, unemployment will be high. Okay, fine. अब उसी टाइम पे अगर इन्फ्लेशन भी रहे, फिलिप्स कर्व ने क्या बोला था? हायर इन्फ्लेशन, लेस अनएम्प्लॉयमेंट. So that can be a scenario of stagflation. If inflation is, if stagnation is there and inflation is also there, that can be a scenario of stagflation. As per Phillips curve, this would not have occurred. अगर इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा रहेगी. बट इन 1970s something happened. 1970s में these oil producing companies, they were like, हम तो लिमिटेड ऑयल ही सप्लाई करेंगे. When they decided to supply limited amount of oil, limited amount of fuel, prices of everything increased because a lot of things depend on fuel. कम फ्यूल अवेलेबल था तो फ्यूल बहुत महंगा बिक रहा था. Prices of everything was increasing. कम फ्यूल अवेलेबल है तो फ्यूल इज नॉट अवेलेबल फॉर बिजनेसेस. Factories were shutting down. Automobile manufacturers were not able to sell automobiles. Why? People are not buying cars because fuel is so expensive. तो inflation ज्यादा है because of less fuel being available. But at the same time, economy is not doing well because enough fuel is not available. Inflation ज्यादा होना, economy not doing well. Situation of stagflation. Situation of stagflation. So this situation of stagflation proved Phillips curve wrong in certain circumstances. It showed that Phillips curve क्या बोला? Inflation ज्यादा होगा तो unemployment कम होगा. But this was a situation, inflation was higher and unemployment is high. Stagflation is a situation when inflation is high and unemployment is also high. And thus Phillips curve वाला argument was found to be wrong in certain circumstances. So situation of coexistence of stagnation and inflation in the economy. Stagnation means low national income growth and high unemployment. तो high unemployment और inflation एक साथ होगा, that is stagflation. Phillips curve said ये नहीं होगा. High inflation के time unemployment would be low, employment would be high. But यहाँ पे there is high unemployment and high inflation together. This situation is stagflation. Do we understand कब हुआ, कैसे हुआ stagflation वाला scenario? Why Phillips curve was proven wrong? Okay. अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही है? Someone was raising hand. मैंने किसी ने हाथ उठाया था शायद. आपने उठाया था? बताइए. क्या कैपिटल गुड जो वैल्यू ऐड करेंगे लेंगे बेटा. बट देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में व्हाट आर वी कंसीडरिंग? वी विल गो एंड सर्वे योर हाउस होल्ड कि बेटा हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन फूड. उसमें विल आस्क हर डिड यू बाय अ इंडस्ट्रियल मशीन? शी विल से नहीं आई डिडंट बाय इट. तो उसका जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो इनको इंपैक्ट करेगा क्या? वैसे नहीं. बट यू आर सेइंग कि सर वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा. ठीक है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इसके लिए प्राइस कम होगा, वो फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होगा. बट व्हेन वी हैव टू मेजर कि होलसेल अभी सीपीआई कंज्यूमर लेवल पे व्हाट इज द प्राइस राइज, अभी होलसेल लेवल पे व्हाट इज द प्राइस राइज. तो जब कंज्यूमर लेवल पे व्हाट इज द प्राइस राइज, उसमें प्राइस राइज ऑफ कैपिटल गुड will not have any impact if her prices are not increasing. अब जब करेगा देखी जाएगी. अगर कैपिटल गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इवेंचुअली प्रोडक्ट्स के भी प्राइस बढ़ेंगे. तो इट मे बी रिफ्लेक्टेड इन सीपीआई मच लेटर.
but CPI is not considering that. CPI is only considering consumer जो चीज कंज्यूम कर रहा है, the things, goods and services which are being consumed by consumer, उससे प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. It is not considering that प्राइस पे इम्पैक्ट मशीन्स का, बड़ी मशीन्स का प्राइस पे इम्पैक्ट का प्राइस बढ़ा है नहीं बढ़ा. और इसे ऐसे समझो, this TV, this screen may be used by end consumers also, so it's a consumer good also. It may be used by businesses also, it's a capital good also. But सारा का सारा टीवी कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहा ना, तो उसमें इस टीवी का वेट बहुत छोटा सा होगा. Whereas when you will consider at wholesale level, इस टीवी का वेट ज्यादा होगा. इसमें कैपिटल वाला भी आएगा, कंज्यूमर वाला भी आएगा, एंड thus वहां पे कैपिटल गुड्स को आर आल्सो बीइंग कंसीडर्ड. इफ प्राइसेस आर गोइंग अप, impact would be much higher. Here only consumer goods are considered. Okay, anything else? No? Okay. कुछ है और डाउट है? नहीं है. चलिए, let's come to factors affecting inflation. अब these are things which are asked in preliminary examination. एक तो ये डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, इस तरह की चीजें आ सकती है, फिलिप्स कर्व से रिलेटेड चीजें आ सकती हैं, स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन क्या है वो सब आ सकता है. दे हैव आल्सो इन मैंने बोला ना, इन रीसेंट ईयर्स इकोनॉमी में बहुत फैक्चुअल चीजें भी आ रही है. तो यू विल सी इन रीसेंट ईयर्स दे हैव आल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन WPI CPI के बीच में डिफरेंसेस, वो सारी चीजें. बट ऑन इन्फ्लेशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अबाउट किस चीज की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, किस चीज की वजह से इन्फ्लेशन कम होता है, या फिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट on currency, on import export. Those are the kind of things which are being asked in the examination. तो वो अब हम पढ़ने जाते हैं फटाफट. What will affect inflation? What will lead to inflation? देखो, दो चीजें हैं. One is demand, one is supply. If demand of some product goes up, then she was earlier ready to pay 10 rupees, but now more people are wanting the same product. Other person will say, I'll buy it in 10.5 rupees. Give it to me in 10. तो the seller के लिए 10.5 rupees में बेच सकते हैं, तो he'll sell it in 10.5 rupees. तो when demand goes up and supply उतना ही है, supply constant ही है, तो prices also go up. Prices also go up. Okay, if demand goes up, prices may go up. Or if supply reduces, suppose demand उतना ही है, you need 10 packet of bread, but supply now reduced to 8 packets. So customers will compete. I'm ready to pay higher. He'll also be, because less supply is there, they'll charge higher amount. So increased demand or reduced supply may lead to inflation. Now demand may increase because of many factors, वो हम समझते हैं. Supply may increase because of many factors, but increased demand and reduced supply will lead to inflation. और prices कम होने का कारण क्या हो सकता है? Reduced demand, increased supply. Right? So let's talk about factors affecting inflation. Increase in demand of products and services. What are the situation when there is increase in demand of products and services? The demand may increase when there is more money with people. There is more money with people when people have more money in their hands. What happens? The demand for various things may go up. So easy money policy. If loans are available cheaply. If loans are cheaply available, तो अगर loans बहुत expensive है, I'll be like, नहीं इतना महंगा लोन नहीं. If loans are cheaply available, they call you, sir, सिर्फ 7% में मैं आपको कार लोन दिलवा सकता हूं और आप एक नई चमचमाती कार के मालिक बन सकते हैं. You'll be like, कर सकते हैं. Low interest rate can increase money supply in the hands of people. Increase disposable income. If in general disposable income that people have, it increases, their demands may go up. They may be ready to spend more. Fiscal stimulus by government. Government increasing their spending. When government increase their spending, again, in a way, indirectly money supply increases. Or when government increase their spending, they are demanding more wheat, more rice, more wheat, more patthar. When government demand increases its demand, what happens? Again, money increases or prices increases.
Then repayment of public debt by government. What is this repayment of public debt by government? Government has borrowed money from people. Through government securities, government has borrowed money. From bank, from people, government has borrowed money. Now when government pays back this money, will bank have more money? Will people have more money? जब बैंक के पास ज्यादा when bank will have more money, bank will be like, come and take loan, come and take loan. Because बैंक के पास बस खुद पैसा पड़ा रहे, bank does not earn anything out of it. Earlier it had given loan to government. Now government has returned the loan. It will give loan to people. It will reduce interest rate. Or you may have bought government securities and given money to bank. When government returns your money, you have more money in your hand. You can invest it somewhere, but there are also chances that you may increase your demand. All these things may lead to increased demand and thus increase in inflation. Do we get this? ये समझ में आ रही है बातें? Similarly, decrease in supply. Supply में decrease because of natural disasters, calamities. बहुत ज्यादा हीट वेव आ गए, टमाटर फील्ड में ही खराब हो रहे हैं. Or flood occurred and crops were destroyed. All this may lead to reduced supply. Reduced supply may lead to higher inflation. Lack of production. Lack of production, कम production. जैसे for pulse we are import dependent. Pulse we are import dependent. We import certain amount of pulse. We produce some amount of pulse. We import certain amount of pulse. But let's say that year our production was lesser. अब हमें ज्यादा import करना पड़ेगा. Globally भी price ज्यादा हो सकते हैं. That may lead to higher inflation. Industrial disputes. What are industrial disputes? When the producer, the owner and the laborers are fighting. Strike है, factory बंद पड़ी है. Production will be lesser, supply will be lesser, inflation may be higher. Or hoarding. Hoarding, black marketeers can do what? They can buy a lot of mustard and they can store all that mustard. So supply will artificially be reduced, leading to increase in prices. You would see, जब आप अगर 1960s, 1970s की मूवीज देखते हो, उसमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ होर्डिंग बार बार दिखाया जाता है कि जो विलन है वो एक सेठ जी होंगे टोपी लगा के, वैसे उस टाइम का इमेज, एंड ही विल बी लाफिंग बिहाइंड, और लोग गरीबी में रोड पे डिमांड कर रहे हैं कि अनाज लाओ, और वो बोरिया भर भर के बैठे हुए हैं. होर्डिंग कैन हैपन फॉर इन दैट मैनर. देन ट्रेड वॉर. Trade war will lead to high duties. So I was importing pulse in 50 rupees per kg, but because of high duties, it increased to 60 rupees per kg. I was importing some things from China. Government, there is a trade war. When a trade war occurs between India and China, India will increase import duties on Chinese products. The same product will be available at higher prices. If the imported products are available at higher prices, demand for domestic product goes up. If their demand goes up, here also price increase takes place. So these are some of the factors. Are there other factors? Yes, there are other factors. Always think of this. Is this something that is going to increase the demand? If it increases demand, inflation हो सकता है. Is it something that is going to reduce the supply? If it reduces the supply, inflation हो सकता है. Increased demand, reduced supply may lead to inflation. Increased demand, reduced supply may lead to inflation. Then there is something also known as imported inflation. Imported inflation is ना demand बढ़ा है ना supply बढ़ी है, but because देश in this economy, but prices of imported things have increased. We are consuming 100 liters of oil. Last year also we were consuming 100 liters of oil. Supply भी 100 liters of oil का है, but import prices have gone up. Because let's say there's a war going on in West Asia. When there's a war going on in West Asia, supply overall may have reduced. तो इंडिया में supply 100 liters ही हो रहा है, but the supplier may say, I have more buyers ready to buy it at higher prices. So this is imported inflation. है ना? Inflation may also go up because of, let's say, depreciation of currency. तो did we understand imported inflation? है ना? तो ये demand supply के अलावा there is
Imported inflation which may lead to, अब imported inflation can be because एक तो उन्होंने सच में prices बढ़ा दिए. Earlier crude oil was available in $40, now they increased it to $50. है ना? That can be one reason. Other is depreciation in currency. What is depreciation in currency? Yeah, crude oil is available in $50 only. But $50, $1 was equal to 70 rupees earlier. But now $1 has become 80 rupees. So 50, when an importer is importing $50 में oil, earlier he was paying rupees 3,500. Now he pays rupees 4,000. Now he pays rupees 4,000. This is what? Depreciation of currency की वजह से inflation बढ़ना. Now in India, what happens is we are, when it comes to current account, we are net importers. We are net importers. तो अगर हमारी currency depreciate हो रही है, तो what that leads to? It leads to our import becoming expensive. हमारा export सस्ता हो जाता है, but because our export is, we are net importers, it still has negative impact on us. Okay, so there can be other factors also which may lead to inflation. आपको जब क्वेश्चंस दिखे वहां सोचो, क्या मेरा इंपोर्ट प्राइस बढ़ रहा है, क्या मेरा सप्लाई कम हो रहा है, क्या मेरा डिमांड बढ़ रहा है. All these things may contribute to inflation. और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? Deflation. Why prices may be going down or why disinflation may be taking place, that is inflation rate is coming down. It may be because of इसका reverse things. Now, another very important thing, यहाँ पे though I have written it in only 2 lines, but these concepts are very, very important to understand. Who benefits from inflation? Who suffers because of inflation? Okay, Aditya is writing, imports become cheaper as there is more money in the hand of people. More money in the hand of people will not lead to import becoming cheaper, ना? ऐसे सोचो, इस देश में हम 3 लोग ही हैं. संतोष, अपार, क्या नाम है आपका? कॉम्प्लिकेटेड नाम है, आशीष. संतोष, अपार, आशीष. सिंपल, 3 ही लोग हैं, है ना? वी ऑल बाय सम इंपोर्टेड थिंग्स, है ना? वी ऑल बाय लेट्स से क्रूड ऑयल. हम तीनों क्रूड ऑयल ही लेते हैं, क्रूड ऑयल ही पीते हैं. जस्ट लेट्स से सिंपल से, अब हमारे पास पैसे बढ़ जाएंगे, उससे क्या क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा? नहीं होगा ना. इनफैक्ट आवर डिमांड में गो अप एंड crude oil consumption may actually go up, demand may increase and prices may actually go up. So imports become cheaper as there is more money in the hand of people. नहीं, शायद किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं. I'm not able to, but this line as simply this line कि if there is more money in the hands of people, import will become cheaper is wrong. Okay, only if I do not know the exact context in which he is asking it, but simply this is wrong. Do we understand? अब देखो कैसे किया हमने, मैंने सिंप्लीफाई करके एक सिचुएशन देख लिया ना. ऐसे ही इकोनॉमी के जो बेसिक देखो, एटलीस्ट टिल 2-3 years back what used to happen, out of 15 to 20 questions which was asked in economy, 60-70% questions were very easily doable. आप पता है एक बार इकोनॉमी अच्छे से पढ़ लोगे, रिवाइज भी नहीं करोगे ना, तब भी 60-70% क्वेश्चंस कर लोगे, बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन सिंपल लॉजिक जो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो. Recently over the last 2-3 years they have started asking a lot of factual things जो पता नहीं क्या इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं. And that is why we also have to go into the factual aspect. But otherwise 60-70% of the questions can be solved just by calm रहना, सोचना क्या हो रहा है. डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, रुपी एप्रिशिएट हो रहा है. डिप्रिशिएशन के क्या होगा? इंपोर्टेड थिंग्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव. ओके, नाउ तो हु बेनिफिट्स फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन? Who benefits from inflation? Let's understand. पहले
डेटर और क्रेडिटर को समझ लेते हैं। देखो, वी आर सेइंग डेटर बेनिफिट्स एंड क्रेडिटर सफर्स। डेटर और क्रेडिटर में who's benefiting? We are saying debtors benefit from inflation and creditors suffer. Who are creditor? जिसने लोन दिया है। बैंक इज क्रेडिटर, डेटर इज जिसने लोन लिया है। राइट, नाउ लेट्स कंसिडर दिस। सपोज आई हैव टेकन 100 रुपीज ऑफ लोन, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? आशीष। एवरीवन इज आशीष टुडे। तो I've taken, let's say I've taken 1 lakh rupees of loan from them. Rupees 1 lakh loan from Ashish. And Ashish said, I'll charge you 12%. मैंने बोला टीचर हूँ, थोड़ा तो इज्जत कर ले, फिर भी I'll charge you 6%. तो next I took this much loan, debtor and creditor. Ashish is charging me 6% interest rate. So next year I'll return Ashish how much? 1 lakh. सही है, इतना ही होगा। हाँ, 1,06,000. I have to return this. But suppose inflation is high. Inflation is 10%. So today I'm able to buy something in 1 lakh rupees. The same thing will be available next year in 1,10,000. भाई को तो नुकसान हो गया। Today when something is available in 1 lakh rupees, inflation is high. Next year the same thing is available in 1,10,000 rupees. So in a way the value of his money has decreased. Even 1,06,000 is lower than 1 lakh of last year, because 1 lakh of last year is worth 1,10,000 now. So I may have bought something. I may have, let's say, when I took his 1 lakh rupees and I bought something. That same thing is available in 1,10,000 next year. I returned him only 1,06,000. Debtor को फायदा हुआ, high inflation. Creditor को loss हुआ, high inflation. So high inflation leads to benefits for debtor, loss for creditor. बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? पक्का? Without doubts? Okay. Then, producer and consumer. Low inflation was bad for producers. Low inflation was bad for producers, if you remember. Producers are like, जब तक मैंने product बनाया, price गिर गए. तो high inflation will be good for producers. High inflation will be good for producer. I bought raw material, I produced something, it took me 6 months. But by 6 months, the prices of the final product have gone up. पैसा ही पैसा होगा. Do we get this? Producers are at advantage, but consumers have to pay higher. Because of inflation, consumers are at loss. Debtor are at advantage, creditors are at loss. High inflation pay. Producers are at advantage, consumers are at loss. Groups whose income is linked to inflation, or groups जिनका income flexible होता है and it is linked to inflation. That is, my employer tells me, ये तो income fixed to inflation. यहीं पे मैं लिख देता हूं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स. और इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड लोन्स. तो suppose my salary is 1 lakh rupees a month. My salary is 1 lakh rupees a month, but my employer tells me, your salary is 1 lakh rupees a month. Next year your salary will increase by जितना inflation है उतना. तो other than your performance increase and everything, we want to ensure that your buying capacity remains same. So if the inflation is 10%, we'll make your salary go to 1,10,000. If it's 5%, we'll make it go to 1,05,000. If it is 1 lakh only.
sorry, if it is zero, if inflation is zero, your salary will not increase because your buying capacity remains same. तो जिन लोगों का सैलरी इज लिंक टू इन्फ्लेशन, ये जो पहला पॉइंट था, ग्रुप्स हुज इनकम इज लिंक टू इन्फ्लेशन। तो पहले एक इनकम कैसे हो सकती है? सैलरी के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में एक इनकम हो सकती है। तो ग्रुप हुज इनकम इज, so group whose salary is linked to inflation, will they benefit? Will they benefit? Yes, they will benefit. Group whose income is not linked to inflation, this year my income is 1 lakh rupees, next year based on my performance you are increasing it to 5%, 1,05,000, but inflation is 10%. So prices have increased more, my salary has increased less, I am at loss. So first point, groups whose income is linked to inflation and fixed income group, ज्यादा इन्फ्लेशन से किसको फायदा होगा? ग्रुप whose income is linked to inflation. ऐसी एक और चीज समझते हैं। सपोज आई हैव बॉट सम बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मैंने गवर्नमेंट को लोन दिया है, गवर्नमेंट सेड आई विल गिव यू 6% इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट सेड आई विल गिव यू 6% इंटरेस्ट रेट, तो मेरे को 6% इनकम आएगी, बट दिस इज फिक्स्ड इनकम। सपोज इन्फ्लेशन इज 10% एंड गवर्नमेंट इज गिविंग मी 6%, एम आई एट लॉस? आई एम क्रेडिटर टू गवर्नमेंट। मेरा अगर इनकम फिक्स्ड है, आई एम एट लॉस। बट सपोज मेरा और गवर्नमेंट का डील क्या हुआ था, बॉन्ड वाज इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड, तो गवर्नमेंट सेड द इंटरेस्ट दैट आई विल गिव यू, व्हाट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड समझो, द इंटरेस्ट दैट आई गिव यू विल बी इन्फ्लेशन प्लस 2%। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग का मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जितना है प्लस 2% will be your interest. Now if inflation is high, do I get more interest? If inflation is high, I get more interest. तो inflation index bonds में who benefit? The creditor, जिसको इनकम मिलने वाली है। बजा लिया फोन। चलो एक और रूल है हमारी क्लास में, ध्यान से सुनो, कल से फॉलो होना चाहिए। क्लास में फोन नहीं बजना चाहिए, बज गया तो सिर्फ आपके लव इंटरेस्ट का बजना चाहिए और उठा के बात करनी पड़ेगी, ठीक है? इफ यू आर अबाउट 30 तो बस पेरेंट्स का बजना चाहिए और किसी का नहीं, बिकॉज बाई 30 यू रियलाइज कि पेरेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। उससे पहले हमारे हॉर्मोन्स लव इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो पर पेरेंट्स का भी वजह, तो फिर इफ यू आर अबाउट 30 उठा के बात करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर यहाँ पे तीसरा मुर्गा बनना पड़ेगा आगे, ऐसा डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? किसका था लव इंटरेस्ट है? मैसेज था कंपनी, तुमने उसके लिए मेरी क्लास डिस्टर्ब कर दी। क्या बताए? एनीवेज, तो इन्फ्लेशन जिस पीपल हुज इनकम इज लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, अगर मेरा सैलरी विल बी रेज्ड बाय इन्फ्लेशन प्लस समथिंग, आई विल बी बेनिफिटेड। अगर जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, बॉन्ड होल्डर्स हु आर गेटिंग इंटरेस्ट, who have bought inflation index bonds, inflation would be higher, they will benefit, inflation would be higher, so they will benefit। ऐसे ही suppose I'm a bank, ऐसे तो हाई इन्फ्लेशन में आई वॉज क्रेडिटर, आई वॉज एट लॉस। मैं बैंक हूं, मैंने किसी को लोन दिया पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो सॉरी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो आई एम एट लॉस। इन्फ्लेशन कम रहेगा, आई एम एट बेनिफिट। बट सपोज द इंटरेस्ट रेट इज लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, तो if inflation is 6%, the customer will give me 6% plus 2%, 8%. Interest rate is linked to inflation. अगर वो होगा तो who will benefit? Creditor, जिसको इनकम मिलने वाला है, इनकम which is linked to inflation, उस in that case inflation higher होने पे those people benefit. If I am a creditor, my income, if the loan is linked to inflation, my income is linked to inflation, तो more inflation will benefit me. If I'm a bond holder भी मैं क्रेडिटर ही है, बॉन्ड होल्डर मैंने गवर्नमेंट को लोन दिया है, आई एम द क्रेडिटर,
If this bond is inflation indexed, higher interest पे I get benefited. If I'm a salaried person and my salary is indexed with inflation, if there will be more inflation next year, I'll be benefited. Whereas fixed income वाले groups would suffer. बैंक ने फिक्स्ड इंटरेस्ट पे लोन दे रखा है आपको. नो मैटर व्हाट द इन्फ्लेशन इज, आई विल चार्ज यू ओनली 7%. इन्फ्लेशन 9% है, बैंक मुझे सिर्फ 7% चार्ज कर रहा है. हु इज एट लॉस? बैंक. बैंक का इनकम इज फिक्स्ड एंड इन्फ्लेशन इज हाई. तो किसी का भी जिसका इन्फ्लेशन इनकम फिक्स है, वो हाई इन्फ्लेशन से लॉस पे होता है. एनी पर्सन हुज इनकम इज लिंक्ड विद इन्फ्लेशन, वो हाई इन्फ्लेशन से बेनिफिट पे होता है. तो groups whose income is linked to inflation, flexible income group, will be benefited. Fixed income groups will be suffering. Now you will see, sir, ये क्या कर दिया आपने? Equity holders and equity holders दोनों ले आए. Equity holders are at benefit also, equity holders are at loss also. It must be a printing error. ऐसा आप सोचोगे, ऐसा है नहीं. Let's understand. इक्विटी होल्डर्स क्या होते, कौन होते हैं, कैसे होते हैं? देखो, वन इज, दिस इज अ कंपनी व्हिच इज प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड आई एम द ओनर इन द कंपनी. इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर. अब प्रोड्यूसर को क्या होता है, फायदा होता है. हाई इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल फॉर प्रोड्यूसर और नॉट? आई एम द इक्विटी होल्डर, डू आई बेनिफिट? Yes, I benefit. So there is a situation where equity holder, shareholder of the company will benefit because company will be doing better. एक प्रोड्यूसिंग कंपनी का मैं ओनर हूं. बट एक दूसरा सिनेरियो भी होता है. I'm an equity holder, I'm a shareholder. जैसे I have Reliance Industries के shares. Fine. But when interest rates are high, no. Think from the perspective of stock market. If we take the case of आशीष, अच्छा आशीष, वैसे क्या नाम है आपका? अंकित, नाराज मत होना. तो let's take the case of आशीष. Ashish has 1 lakh rupees in his hand. Inflation is high. Inflation जब ज्यादा रहता है तो what does RBI try to do? RBI tries to increase interest rate so that inflation would be controlled. ये हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. Your fourth booklet will be on money supply, banking, monetary policy, etc. There we'll understand this in more detail. But whenever inflation is high, RBI tries to increase interest rate so that market में पैसा कम रहे. तो RBI increases interest rate. तो now आशीष, फीस की उसके बैंक में FD interest rate increase हो गया है. And then he has an option of investing in stock market. ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाके रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स भी खरीद सकता है. He's like, stock prices तो फ्लक्चुएट करते हैं, थोड़ा रिस्की है, but I'm getting good interest rate. Where will he go and invest money? Chances that he'll invest money in bank or in fixed deposit will be high because interest rate अच्छा है. But in this scenario, suppose I'm a equity holder here. क्या रिलायंस के शेयर्स की डिमांड कम हो रही है? Because there is less money in the economy, because of high inflation, RBI interest rate बढ़ा रही है. There is less money in the economy. Less people will be invested in stock market. If less people will be investing in stock market, क्या stock prices कम होंगे? If stock prices are low, as an equity holder, I'm at loss also. I'm at loss also. नहीं, समझ में नहीं आया? आपको नहीं आया? सबको आया समझ में कि how equity holders can be benefited? If I'm like, I'm equity holder, I don't want to sell the shares of the company. Fine. Reliance will produce more, earn more, give more dividends. पैसा ही पैसा है. But I'm someone who's an equity holder, but I'm interested in trading the stocks. Reliance का थोड़ा value बढ़ जाए. I'm buying it at 1200 rupees. Tomorrow, if it becomes 1400 rupees, I'll sell it and I'll earn 200 rupees. But when demand for these shares, when investment in stocks reduce because of high interest rate, because people are keeping more money in the banks, in that scenario, मेरे पैसे, I invested 1200 rupees. It's not. In fact, prices are going down. So high inflation may lead to what? May lead to equity holders suffering also. Do we understand this? Okay. So
Who suffers? Debentures or bond holders are also what? Creditors in a way, है ना? तो they also suffers. But वही अगर bond क्या होता? Inflation indexed होता, तो they would have become groups whose income is linked to inflation. They would have benefited. तो ये दो, these are only two lines, but they're full of a lot of logical conceptual understanding. इन दोनों को, who benefits, who is at loss. अब यहां पे groups whose income is linked to inflation में please salary linked to inflation, salary linked to inflation, bonds linked to inflation, loans linked to inflation. तो loans बैंक ने दिए होंगे, loans बैंक ने दिए होंगे और उस पे इनकम कैसे आएगी? Interest. But if interest is linked to inflation, what would happen? Banks will get more money. Bank का income is linked to inflation, bank is benefited. Bondholder has given loan to someone, but interest is linked to inflation. My income is linked to inflation, I benefit. If my salary is linked to inflation, I benefit. Fixed interest rate वाले लोग थोड़ा suffer करेंगे. I told you, in first half of the class today, it was all factual. Second half is based on more concepts. So यहाँ, though we have studied only these two lines, but you should be able to understand the concepts, and you will see when we go to solving PYQs, you'll be like, इतने आसान होते हैं क्या ये? हम कभी-कभी PYQs देख के घबराते हैं, but they're easy, they're simple. And even if we make mistakes in these PYQs, उन्हें समझ लोगे जब एक बार हमने पढ़ लिया, PYQ solve करते time we applied it. While applying it, we may make some mistakes, but eventually once you have understood it, you will see most of the questions which are asked in the examinations are simple, easy to attempt. Yes. So I say the person who is invested in equity is the person who is holding the equity for the long term and नहीं भाई, ऐसा रूल आपने क्यों बना लिया? investing in stock market, right? And when he's investing in stock market, then he's giving amount, taking amount, getting money. But फिर भी वो equity holder तो है ही. That person is still equity holder. Please consider. मेरा 1 लाख रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टेड है. मेरा 1 लाख रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टेड है. अब रिलायंस इंडस्ट्री प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, प्रॉफिट ज्यादा करेगा, तो मुझे डिविडेंड देगा. इन दैट वे आई एम बेनिफिटेड. एंड आई एम थिंकिंग कि मैं चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं. आई एम नॉट गोइंग टू विड्रॉ दैट मनी फॉर नेक्स्ट 40 years. So that 1 लाख रुपीस विल बी एज इट इज. पर सपोज 1 साल बाद आई फील लाइक नहीं यार, आई नीड मनी. I want to sell those stocks, but because of less demand of those stocks, because less people are interested in the stock market, because people withdrew from stock market, मैंने 1200 रुपीज में स्टॉक खरीदा था, वो अभी 1000 रुपीज में ही अवेलेबल है, तो मेरा लॉस भी हो सकता है ना? तो इक्विटी होल्डर, अब आपने इक्विटी होल्डर का अपने मन में डेफिनेशन बना लिया कि ओनली लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स आर इक्विटी होल्डर. किसने कहा? लॉन्ग टर्म, हाँ, दैट इज वाई पहले में भी इक्विटी होल्डर डाला है, दूसरे में भी इक्विटी होल्डर डाला है. समझो क्या? हाँ, अरे यहाँ पे सवाल है इन्फ्लेशन से क्या इम्पैक्ट होगा. इन्फ्लेशन से क्या इम्पैक्ट होगा, इससे नहीं कि लॉन्ग टर्म के रिस्क क्या है. क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन से क्या इम्पैक्ट होगा. आर वी गेटिंग इट? समझ में आई है? तो ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझो. कोई भी डाउट है, आस्क इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन वुड बी फ्रॉम दीज टू लाइंस. देखो अभी ना शेयर होल्डर्स आर इक्विटी होल्डर्स. शेयर होल्डर्स, अच्छा ये बॉन्ड होल्डर्स की बात करो. शेयर होल्डर्स तो इक्विटी होल्डर्स है. बॉन्ड होल्डर्स क्या है? बॉन्ड होल्डर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बॉन्ड इशू किए कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, प्लीज कोई दे दो. मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे दिए, तो मैं बॉन्ड होल्डर हूं. तो मैंने रिलायंस को क्या दिया है? लोन दिया है. मैं क्रेडिटर हूं. क्या क्रेडिटर को लॉस होता है? ज्यादा इन्फ्लेशन पे क्रेडिटर को लॉस होता है? डेटर को? ये था ना पहला वाला, क्रेडिटर, जिसको, क्योंकि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1 करोड़ रुपए दिए हैं, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज सेड कि भाई मैं तुम्हें 10% इंटरेस्ट दूंगा,
बट इन्फ्लेशन इज 12%, तो मेरे मनी की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना नेक्स्ट ईयर। डिबेंचर्स भी, तो अभी बॉन्ड, डिबेंचर्स, इक्विटी, इस कैपिटल मार्केट में वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। बट अभी ऐसे समझो, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स बोथ आर व्हाट, एक तरह से लोन जो देते हैं, तो एक तरह से वो क्रेडिटर्स है। बॉन्ड होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स तो क्या होते हैं, लॉस फेस करते हैं इफ इन्फ्लेशन इज हाई। बट इफ द सेम बॉन्ड वाज लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, रिलायंस ने बॉन्ड इशू किया, बोला आई विल गिव यू इंटरेस्ट रेट विच इज इन्फ्लेशन प्लस 3%, I'll give you interest rate which is inflation plus 3%. What would happen in that case? If inflation is high, 10%, I'll get interest rate of 13%. If inflation is 5%, I'll get interest rate of 8%. तो that will be, ये बॉन्ड होल्डर्स, ये वाले बॉन्ड होल्डर्स जो इन्फ्लेशन इंडेक्स थे, वो इस कैटेगरी में डाल दो, ग्रुप्स हुज इनकम इज लिंक्ड टू इन्फ्लेशन। मैंने यहां बोला ना बॉन्ड्स कौन से, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड। बाकी बॉन्ड होल्डर यहां आ रहे हैं, बॉन्ड्स इन्फ्लेशन इंडेक्स वाले यहां पे। क्रेडिटर्स जिनका इंटरेस्ट रेट नहीं, हाँ क्रेडिटर्स जिन्होंने लोन दिया है, और इंटरेस्ट रेट इज लिंक टू इन्फ्लेशन, और सैलरीज व्हिच आर लिंक टू इन्फ्लेशन, दीज आर ग्रुप्स हुज इनकम डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन। तो यहां पे क्लियरली लिख लो, सैलरीज लिंक टू इन्फ्लेशन, बॉन्ड होल्डर्स हैविंग इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, क्रेडिटर्स गिविंग इन्फ्लेशन इंडेक्स लोन्स, क्रेडिटर्स गिविंग लोन वेयर इंटरेस्ट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स। लिख लो ये तीनों चीजें ध्यान से, एक सेकंड रुक जाओ, सब लोग लिख लें फिर, है ना। क्या, सैलरीज लिंक टू इन्फ्लेशन, सैलरीज लिंक टू इन्फ्लेशन पहला, बॉन्ड होल्डर्स ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, बॉन्ड होल्डर्स ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। थर्ड, क्रेडिटर्स गिविंग loans whose interest is linked to inflation, creditors giving loans whose interest is linked to inflation। इन तीनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा, all three of them will be benefited। बट सिर्फ बॉन्ड होल्डर है, सिर्फ क्रेडिटर है, सिर्फ फिक्स सैलरी वाला पर्सन है, वो सब क्या होंगे, सफर करेंगे। इज इट क्लियर, पक्का। तो फिर से सोच, इन दोनों लाइंस को अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट है पूछ लो। आप फिर से हाथ उठा रहे थे, अभी जब इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो प्राइस राइज वाली बात कर रहे हैं। Do not come to this now, he is saying कि sir deflation is also a type of inflation, negative inflation, है ना। we are saying inflation से किसको फायदा है, means price rise से किसको फायदा है। you may say कि sir inflation also means price decline which is negative inflation, उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। this will, हाँ हाँ इनका तो इसीलिए तो we are saying who benefits from high inflation, अगर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो इनका लॉस है। who benefits from high inflation, who suffers from high inflation, नोट इट केयरफुली, हाई इन्फ्लेशन से किसको फायदा है, किसको नुकसान है। अगर प्राइस फॉल होगा, दे विल सफर, दे विल बेनिफिट, उल्टा हो जाएगा ना। गॉट इट, बात समझ में आई है, ओके। अब अजय इज राइटिंग लॉल, तो सवाल क्या है कुछ पता नहीं बस। अदर इंपैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा उसकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। अभी समझाते हैं कैसे होगी, विल स्टडी इट इन मोर डिटेल्स व्हेन वी आर स्टडीइंग एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा एक पूरा एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एक रूल अभी के लिए ध्यान रखो, इन अ कंट्री वेयर प्राइसेस आर हाई, वेयर इन्फ्लेशन इज मोर, वेयर इन्फ्लेशन इज हायर, देयर करेंसी विल डेप्रिशिएट। आपको पीपीपी वाला फंडा पता हो, पीपीपी एक्सचेंज रेट में भी अपना एक्सचेंज रेट का डेप्रिसिएशन हुआ, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में भी देयर में बी डेप्रिसिएशन, इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव। इंपैक्ट्स में if inflation is high, if inflation is high, what happens, your currency will depreciate, when your currency depreciate your imports become expensive,
योर इंपोर्ट्स में बिकम एक्सपेंसिव। पूछ लो, यहां तक तो आ ही गए हो। ये ऐसे करके, हाँ तुम सच में पूछ लिए। पूछो। हाँ तो मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन होगा ना, क्या दिक्कत है, वही तो बोला है। हाँ हाँ, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना। हाँ, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। मनी सप्लाई बढ़ा तो भाई डिमांड फॉर इंपोर्टेड थिंग्स विल आल्सो गो अप ना। तुम्हें पता नहीं किसने क्या पूछा है, बस उस लड़के ने बोला था कि चीप हो जाएगा। हाँ, मनी सप्लाई बढ़ेगा, इनके हाथ में पैसे बढ़ेंगे तो ये ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे ना, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं ना, राइट। ओके, तो ये बात समझ में, अदर इंपैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में, है ना, डिप्रिसिएशन में टेक प्लेस, डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, ये हम बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज में ज्यादा पढ़ेंगे, है ना। ये किसकी वजह से होगा, डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी की वजह से होगा। डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी में लीड टू इंपोर्ट्स बिकमिंग एक्सपेंसिव। ओके, नाउ फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इन्फ्लेशन कंट्रोल। हाउ कैन वी कंट्रोल इन्फ्लेशन, और किन किन क्या क्या मेजर्स यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन भी पूछती है कि इफ इन्फ्लेशन इज हाई गवर्नमेंट विल नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉट डू मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, इसके अलावा जो चीजें वो नहीं करनी चाहिए। ओके, तो फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन इंक्रीजेस व्हेन देयर इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी। तो अगर हमें इन्फ्लेशन डिक्रीज करना है तो वी हैव टू हैव अ कंसोलिडेशन, है ना, वी हैव टू हैव अ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी हमें टाइट रखनी पड़ेगी। मनी सप्लाई इज लेसर, तो व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई गवर्नमेंट विल रिड्यूस इट्स स्पेंडिंग, fiscal consolidation should take place. When inflation is high, RBI will increase interest rate and reduce money supply. RBI will reduce money supply, and government will go for fiscal consolidation, reducing its fiscal deficit. Government will reduce its spending. तो यहां पे हमने ये टर्म क्यों यूज किया, रेजिलिएंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। रेजिलिएंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का आइडिया ही ये है, मतलब ही ये है क्या कि यार जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो हमारी पॉलिसी से हम उसे कंट्रोल कर पाए। तो हमारी पॉलिसी से when will we able to control it, will be able to control it when at the time of high inflation government decides will not do a lot of spending, because when we do a lot of spending inflation goes up, demand goes up. RBI decides reduce the money supply, inflation is very high, people have a lot of money in their hand, nikalo, reduce the money supply, money supply will reduce when interest rates are high, when repo rate is high, when reverse repo rate is high, when SDF is high, when CRR is high, when SLR is high, all these things will lead to increase interest rate and thus reduced money supply. Now some of us may not be able to understand repo, reverse, सब पढ़ेंगे डिटेल में, don't worry, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। Okay, then factors which contribute towards inflation control और किससे हो सकता है, by increasing competition. When we increase competition, what happens? When competition increase, everyone tries to get customers by cheaper and cheaper prices, right? By improving ease of doing business. When ease of doing business is increased, more businesses come, competition increase. When ease of doing business occurs, the cost of running a business reduces. कैसे cost of running ease of doing business अच्छा होता अगर, तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी होती, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा होता, हमारे यहाँ जैसे अब ऐसे समझो कि अगर लॉज आर लेस कॉम्प्लिकेटेड देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है, तो हमें सीएस को बहुत सारे पैसे नहीं देने पड़ते, हमारे लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होता, हम फीस और कम कर सकते थे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, लाइट बार बार नहीं जाती, तो हमें जबरदस्ती का जनरेटर का खर्चा, यूपीएस का खर्चा नहीं करना पड़ता। क्या होता, वी कुड हैव आवर कॉस्ट वुड बी लेसर, तो देयर वुड बी चांसेस कि वी कैन फर्दर रिड्यूस द प्राइस। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा रहता, तो वी कुड हैव इंश्योर्ड दैट इन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर मोर क्लासेस आर हेल्ड। मैं रात में 11 बजे तक भी पढ़ा रहा होता, बच्चे सेफली घर चले जाएंगे, बट अभी आई एम नॉट एबल टू डू दैट, राइट। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना कैन ऑल्सो, तो ये जस्ट
ease of doing business, more competition, etc. can also lead to lower inflation. Then ये adoption of monetary policy framework for fiscal targeting. और ये fiscal targeting क्या लिख दिया? रुको, inflation targeting. I'm sorry. Please correct it. Inflation targeting. देखो, my notes are not supposed to be. It's not supposed to be a book. बाहर जाके अकेले. This is supposed to be class notes. अगर बुक होती तो मैंने जो 2 लाइन में वहां लिख रखा है उसको मैंने पूरा डिटेल में समझाया होता, है ना? तो बस अपने दोस्त को ये बोलना कि ये ले, इसे रीड कर ले, बहुत अच्छा है, एग्जॉस्टिवली सब कुछ कवर किया है, वो फिर यहाँ पे क्या पढ़ता? फिस्कल टारगेटिंग. गड़बड़ हो जाती ना. इन्फ्लेशन टारगेटिंग तो हम पढ़ेंगे. वील ऑल्सो स्टडी दिस दैट अर्लियर बिफोर 2016 RBI through its monetary policy used to target a number of things. It used to focus on a growth rate. It used to focus on rupee का appreciation depreciation करवाना है नहीं करवाना. But now primary target of RBI, primary target of India's central bank is what? Control of inflation. तो हम बोल रहे हैं कि what can contribute to inflation? Adoption of monetary framework, policy framework. मतलब monetary policy framework कौन किसका होता है? RBI का होता है for inflation targeting. That is when central bank का monetary policy framework is primarily focused on controlling inflation. जैसे RBI follows flexible inflation targeting now, where it says that primary purpose of my monetary policy is to ensure that CPI combined inflation remains between 4 plus minus 2%. Right? This can also contribute to this. Now let us understand the concept of base effect. Inflation and base effect. ये शायद हमें पता है. हमने अगर बेस बहुत लो हो जाता है तो इससे last year prices were very low. It may appear that this year prices have increased a lot. Last year prices were very high. Last year tomatoes were available in 200 rupees per kg in July. This year tomato is available in 190 rupees per kg. Government में से देखो हमने टमाटर के प्राइस कम कर दिए, but 190 rupees per kg is not कम price. It's appearing less because of high base. Because inflation is calculated with respect to previous year. CPI is calculated with respect to base year, but inflation हमेशा with respect to previous year. तो previous year में अगर something was very low वाला, base was very low, the number may appear very high. Growth, inflation rate may appear very high. GDP growth may appear very high. Or if it was very high, the growth, inflation may appear very low. This is what? Base effect. This is known as base effect. So, when changes in CPI in the base month have a considerable impact on changes in year-on-year, this effect or base effect. Base effect are therefore when changes in the CPI in the base month. अब base month मतलब जिस like आप जून से जून में कंपैरिजन कर रहे हो तो CPI उस टाइम इतना ज्यादा था या इतना कम था, so that उसकी वजह से अभी के इन्फ्लेशन नंबर पे इम्पैक्ट आ रहा है. That is known as base effect. Okay, I hope we have understood what base effect is. Should I explain it? मतलब बेसिक्स में जाके I can explain it again. No? Cobweb phenomena. There's a term called Cobweb phenomena that I want to use. Okay, there are two things. One, Varun says, doesn't the overall value of returns decrease due to high inflation for the equity holders even in returns are at the same rate as anticipated, similar to what was happening with the debtors, that is erosion of value of future returns? No, beta. देखो, suppose think from the perspective of Mukesh Ambani. Mukesh Ambani is an equity holder in Reliance Industry. Now, Reliance Industry is a producer. It is buying raw material and it is producing goods and services. It is buying raw material, processing it, producing goods. By that time, prices increase. Does Reliance Industry make more profit? As an equity holder, Mukesh Ambani benefits. तो हर साल inflation ज़्यादा है. He can keep producing more and more. Prices he will get will be good. Long term, maybe Mukesh Ambani benefits. Right? I hope you have understood this. Now, M. Renuka Devi is saying, sir, please reduce Hindi usage. Yes, but I'll eliminate it. I'll try to speak each and everything in English only. Just remind me whenever I transition to Hindi. Hindi is my mother tongue. So what happens is, naturally, when I have to explain something,
sometimes like there is this tendency of speaking Hindi. So please remind me. You can remind me 10 times in a class. The moment I speak something in Hindi, do it. I'll not consider it bad. I'll not consider it rude. I'll not consider it disrespectful. It is your right. I have promised that I'll be teaching everything in English. This class is supposed to be taught in English language. Okay. So if you're not able to understand anything, or if you think that I have used some Hindi words, do remind me again. Okay. It's just because I intend to speak everything in English, but my mother tongue is Hindi. And because of that, it's very natural for us to divert there. Okay. Where were we? Cobweb phenomena. Let's understand the concept of cobweb phenomena. Let's take an example of the year 2015. 2015, December. The pulse prices were tur dal, arhad. You understand what arhad is? Tur dal or arhad dal. Ab arhad ko, what will I call it in English? Tur nahi. Pigeon pea? Sure. No, arhad dal or tur dal. It was available in rupees 200 per kg. Rupees 200 per kg. Because domestic production in India was lower and international prices for pulses were also low. The government took measures. Government increased the MSP for pulses. Government announced that it will be procuring more pulses. So next year, more farmers. In 1 or 2 years, more farmers decided will go grow pulses. So when they decided they'll grow pulses, what happened? More pulses got produced. When more pulses got produced, prices went down. The price was high here. Price eventually came down. When price came down, farmers are like, we are not getting the right benefits. We'll move away from pulse. So some farmers moved away from pulse. Production reduced. Production reduced. Supply reduced. Prices again went up. Prices again went up. Farmers were like, oh, prices are high. I should grow pulses next year. Farmer grew pulses. Production increased. Prices fell down. This is called cobweb phenomena. This is called cobweb phenomena. Cobweb theory is the idea that price fluctuations can lead to fluctuation in supply, which cause a cycle of rising and falling prices. The farmers are caught in the cobweb phenomena when they base their sowing decision on prices witnessed in the previous marketing period. Farmer sees, oh, last year pulse price was high, let me grow pulse. More farmers will grow pulse prices will be low. Farmers will give up pulse production. But then more farmers give up pulse production, prices are high. So when you base your decision on what? On previous year prices. You should base your decision on what are the expected prices in the coming year when I'll be harvesting it. This year more farmers are going for it, prices would be lower. So if the farmer observes a higher price for a specific crop in period T -1, he will opt to produce more of it in period T. However, if the production of the crop exceeds market demand, prices fall in the period T, signaling farmers to produce less of the commodity in period T+1. This is cobweb phenomenon. This is cobweb phenomenon. Do you understand this? Okay. Then, housing sector prices ke liye bhi there are some index. In preliminary examination, you may be asked, these indexes are produced by whom, those kind of things. So, National Housing Bank hai. So, India may will study about like in the fourth booklet fourth topic. Abhi fourth booklet will also be on this government budgeting only, because I have not included government budgeting wala jo booklet hai na, in that I have not included PYQ. So I'll give you fourth booklets where there are some updates, some current updates, etc. plus PYQs. The fourth booklet would be that, but fourth topic will be what? Money supply, banking, financial intermediaries. When we will be studying financial intermediaries, we'll also study about all India financial institutions. There we'll study about NABARD, SIDBI,
We'll study about National Housing Bank too. The National Housing Bank, NHB, is one of the all India financial institutions that we have. It is focused on promoting funding for finances for housing sector. And it publishes two indices to measure. It publishes two indices to measure price increase in housing sector. Because we are studying inflation here, so that's why we are only interested in these indices. When we'll be studying financial institution, we'll be interested in other aspects of National Housing Bank. So National Housing Bank publishes two housing price indices. One is Housing Price Index Assessment Price, HPI Market Price. There are two indexes or two indices which are produced by National Housing Bank. The first thing is, who produces these indices? I hope you'll be able to answer that. Housing Price Index, Assessment Price, Housing Price Index, Market. Both these things are what? Both these things are produced by National Housing Bank. Now, what is HPI Assessment Price? It is based on the valuation of price of residential unit collected from primarily lending institutions. Lending institutions with banks, etc. When do you go to bank? When you go to bank, when actually you have to buy a house. And in that house, when you're buying house, the bank assesses the price. Okay, it's a house of 2 crore rupees. I can give you a loan of up to 1 crore 80 lakh rupees. So HPI assessment price, how National Housing Bank get information about price kitna hai, how much is the price? It gets that number from the loans given by various financial institution. When the financial institution give loan, they also assess the value of the house. So price is increasing or decreasing can be determined by this. One is this. Other is HPI market price. It is based on the market prices for unsold inventories collected from developers. Here developers who are building houses, they have unsold inventories and they are saying ki we will be selling it at 1 crore rupees. This unit will be sold at 1 crore rupees. This unit will be sold at 50 lakh rupees. This unit will be sold at 1.5 lakh rupees. This is from developers. So one, you get prices from lending institutions. Other, you get prices from developers. Lending institutions will give you those prices जिसमें actually the houses are being sold. Because lending institution pe you will go when you are taking loan for buying a house. Whereas developers are like, this information would be like, at what prices do I want to sell things? Okay, so then NHB also produces a composite index. A composite index is calculated for 50 cities across India using the population of the cities as its weight. The composite index include both these things. Iske basis pe it calculates a composite index of housing prices in the country, and that is how it measures it. Now, you would say, sir, isme what is happening? Can you give us that data? We'll get that data from the latest Economic Survey of India. Last year, the Economic Survey of India that came in July, every year in the inflation chapter, they refer to HPI. Last year, wale mein, they haven't referred it. They haven't included it. So I've only included the factual part. The analysis, whether prices are going up, going down, that will cover once Economic Survey of India comes on 31st January, only after that. Okay. So in the July Economic Survey of India, it's not there. In 2022-23 Economic Survey of India, it was there. So I used to teach it till last year. Abhi 2 saal pehle ka data is not very relevant for us, it's not very important for us. But there are two indices, one composite index, all produced by National Housing Bank. In the HPI assessment price, we go to financial institutions based on their assessment of the asset property ka value. We determine whether 3 BHK homes in metro cities, its price, assessment price used to be 1 crore. Now it is 1.1 crore. Prices are increasing. Right? How will we determine whether prices are increasing? Then other method is HPI market price. Here they get information from developers. DLF may be developing a housing society. What is the price at which you are selling a 3 BHK house in metro city with these facilities? What is the price at which you are selling 2 BHK house? ऐसे ही अलग-अलग developers से you will get information. So they'll talk about unsold inventory, what is the price that they have quoted, what is the price they are doing. On that basis, can we determine the increase in prices? Yes. ऐसे ही, to control that. Now this is not a inflation wala chapter topic. This is primarily a topic
Let me make you understand again. Do you love me? समझी कि नहीं? नहीं, रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई नहीं. Let's come back. Pharmaceutical prices. Now, this is not a topic on inflation. This is just like there is a national pharmaceutical pricing policy. Under it, various measures are taken to control prices. This is all factual. You can read it yourself. There is nothing special about it. Here, it's not about inflation and all. It's about how government has taken measures to ensure that essential medicines are not available at higher prices. So this is more of a topic of social justice. But in Economic Survey of India, this year it was not discussed, but till last year it was discussed in inflation wala chapter only, and that is why I've included it here. Okay, now efforts to control inflation, I think we have already done it. Monetary and fiscal policy measures can be taken. Increase interest rate, reduce money supply, inflation can be controlled. Fiscal policy mein fiscal consolidation. Rather than expansionary fiscal policy, go for tight fiscal policy where government is spending less money. That can control inflation. Advisories to state government for strict action against hoarding and black marketing. You understand this? If measures are taken against that. Higher MSPs to incentivize production of food items. Like less pulses available in the country. Because of that, inflation is happening. Government may increase its MSP so that next year more farmers will be producing pulses. Can this also contribute to fight against inflation? Yes. Price stabilization fund schemes. The government also has price stabilization fund scheme. Jisme what it does is it takes measures to it creates buffer stock. It takes measure to reduce the cost of transportation, reduce the cost of storage, etc. Through this also it controls inflation. Then export duties on export of certain food items. Sometimes when prices go up, government impose export duties so that export becomes difficult, export becomes expensive, so that like more of that is available in the domestic market only. Then Essential Commodities Act is there. Essential Commodities Act government can put various restrictions like you cannot store more than this much amount. Those kind of things are there. They also contribute to our fight against inflation. Okay, now inflation at different rates are termed differently. They say when inflation is less than 3%, we call it creeping inflation. When inflation is between 3 to 7%, we call it walking or trotting inflation. Up to 10%, we call it walking or trotting inflation. When inflation is above 10%, between 10 to 20%, it is called running inflation. Uske baad, we call it hyperinflation या runaway inflation or galloping inflation. These terms are used. तो थोड़ा सा पता होना चाहिए. Not very important, but you should know whenever you're reading कि creeping inflation है या hyperinflation है, what are they actually trying to refer? Okay. India's tomato and onion conundrum. This is basically a current wala thing. Tomato prices keep on going up every year. Every year in July August wala period, you will see tomato prices are very high. So what are the primary reasons for it? So similarly, sometimes you will see onion prices are very high. What are the reasons behind this high prices? So there are three primary reasons. One is seasonality, other is irregular shock, third is poor infrastructure. Let's understand all three of them. Dekho, what is seasonality? Tomatoes are available throughout the year. It means tomatoes are produced in different seasons. Tomatoes are not like wheat, which is only produced in Rabi season. There is tomato produced in Kharif. There are tomato produced in Rabi. There is tomato which is produced in between also. But 70% of tomato is produced in Rabi season. And that tomato is available somewhere between March, April, May, and you will see at that time tomato prices are pretty low. बट उसके बाद टोमेटोज विच आर ग्रोन इन मार्च अप्रैल मे वो 3-4 महीने बाद आना शुरू होंगे जुलाई अगस्त में. दे आर मच स्मॉलर इन क्वांटिटी. तो वन रीजन फॉर वेरी हाई प्राइसेस अराउंड जुलाई अगस्त एवरी ईयर इज व्हाट? Seasonality, seasonal variation in our production, which leads to high prices. Did you understand this? First point. Second, irregular shocks. Irregular shocks, sometimes flood occurs, sometimes heat waves occur, sometimes diseases occur. They create problem. For example, in 2023, despite ample stock of onion in the country, a high proportion of bad quality onions due to a prolonged period of excess summer heat had made good quality onions expensive. ऐसे diseases वगैरह sometimes. So these are irregular shock. These are not regular things. And then there is poor infrastructure, which leads to lots of wastage. Absence of cold storage facilities, absence of proper transportation facilities leads to deterioration in quality. Leads to deterioration of quality. सड़ जाते हैं, उन्हें फेंकना पड़ता है, वो सिनेरियो आता है.
These three are the primary reason. Mains में भी आएगा तो यही 3 reasons है. We'll write it differently, we'll present it differently, but idea is this: seasonality, irregular shocks. Irregular shocks में there can be biotic, abiotic shocks, and then there are poor infrastructure, storage, transportation, processing facilities are missing. Like when you must have seen those kind of videos where farmers are just throwing away tomatoes and potatoes on road, right? At that time, when we have excess production, when tomatoes are available at low prices, at that time, if you could have processed them and made tomato puree kind of thing, which could be used later, then at the time of less availability and high prices, this processed food item could have been used. Right? I agree कि some of us may feel कि यार fresh tomatoes में जो मजा है उसमें नहीं है. But I'll tell you another thing. We used to think similarly about ginger and garlic. But now ginger and garlic paste is what I use. मुझे जब चिकन मटन कुछ बनाना होता है, what do I do? जिंजर अब कौन लेके पैक्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट अवेलेबल है ना, कंफर्टेबली अवेलेबल है. तो ऐसे ही इफ वी कुड हैव प्रोसेस्ड टोमेटो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, है ना. तो गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स. एक बार रीड ऑल फैक्चुअल थिंग्स. What more it needs to do? So it needs to ensure that in lean season more production happens. Farmers can be incentivized to produce. Seasonality is one of the factors. तो सीजनलिटी वाला फैक्टर को डील करना, इन्वेस्टमेंट इन बेटर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, promoting food processing industry. These are certain things that we need to keep in mind. फाइनली एक जो टॉपिक हमें इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग पढ़ना है वो है आरबीआई एंड इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग. दैट वी विल स्टडी विद द बैंकिंग सेक्टर इन द फोर्थ टॉपिक. अभी हम कल जो शुरू करें, कल नहीं, जो नेक्स्ट मंडे शुरू करेंगे, दैट विल बी द थर्ड टॉपिक. दैट विल बी अबाउट द बुकलेट दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट. एक लास्ट में जो टॉपिक बचा है, ये टाइप्स ऑफ गुड्स एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. We will study this in the coming class. We'll do PYQs and then we'll jump on to the topic of what? Topic of government budgeting, etc. Okay, so I'll see you on Monday. From tomorrow, what is happening? From tomorrow, silence. कल क्लास है ना, पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना. I will see you on Monday. You will come tomorrow for Modern India's class. Tomorrow and day after tomorrow, what do you have? Modern India. है ना, सुबह 9 बजे से ही है क्लासेस. तो I'll see you on Monday with economy classes. So we have 3 weeks, 9 classes for economy. उसमें हम 7 major issues है उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं. Thank you very much.